Assalamu alaikum. Very good evening to all of you. Just wanted to make an announcement first. We have namaz break from 7 to 7:10. So those people who have joined in can go and take their namaz break. We will resume the session at 10 past 7. Okay. So we'll stay online, stay live. Questions dialog box. Just an announcement that we are taking a namaz break in the initial 10 minutes, and then we'll begin the session at 10 past 7 sharp. Maz, not Nimaz. It's not Nizam. Yes.
Okay, let's make a beginning. Nizam, if you're in the call, can you please let me know how many of the people have submitted uh, their ethical dilemmas, their ethical stories? Just in a short question. Sorry? I'll check in. There were 16 and 19 to 21. Okay, so fewer than the people who are attending the sessions. Very few. And Okay, that's unfortunate. it's a mix of members and the other affiliates and students group. Oh, all right. Okay. It's a very small number. Okay. All right. All right. So, oh, let's be very open and honest here. I think, you know, if we said this in the beginning that if you want to gain the maximum out of this program, and if you want results to start showing to you, right, you will have to put in your effort. And if you're not able to do that, if you're not taking time out enough out of your own personal routines, it might not benefit at all. I mean, just listening to this conversation uh, is not going to take you anywhere. It's just going to maybe do cause some disruption, but then the results will not come. So my very strong suggestion to all of you, if you open up the initial email that was circulated regarding 6 digits, it categorically said that this is a program which requires a lot of taking time out, a lot of effort being put in. So it wasn't a big thing. It wasn't a very detailed task. It was just a short page. Then you had to write. Uh, and unfortunately, that has not happened. Nizam, if you can get this chat window out. Okay, so those who have submitted and they want to discuss it in the group, if they can raise their hand so that I can ask Nizam to open up their ethical dilemmas. Let's discuss them, and then let's see what other people have to say about it, and then analyze the situation also. Nizam, if you can get the chat window out, please. And those who have submitted their ethical dilemmas, if they can raise their hands. Thank you, Kashif. Thank you very much. Thank you, Akib. Arsalan, rain was happening today. Rain didn't happen. Maybe I'm sure there must have been electricity available in some part of yesterday or the day before yesterday. So remember, this is not the. I mean, one should avoid to do this. Yeah. I mean, it's best that given 2.5 days, it's best that you take time out and you sit down and do it. Yeah. Thank you very much, Fahim. So what I'm looking for is hand raises, people who want to share their ethical dilemmas in the group. I'm just going to then ask Nizam to open them up. So Kashif Ijaz, since you were the first one to respond, there you go. Can I ask Nizam to open up Kashif Ijaz's ethical dilemma? No, I'll unmute him. That's all right. आप काशिफ का अगर वो open कर लें document जो इन्होंने submit कराया हुआ है. Kashif, have you submitted it to Nizam at the email address? Let me unmute you. जी Kashif, you're unmuted. अस्सलाम ये वालेकुम. मैंने ईमेल एड्रेस पे नहीं, जो गूगल फॉर्म वाला पेज है, मैंने अच्छा, गूगल फॉर्म के ओके. थ्रू सबमिट करवाया. अपलोड किया था आपने. ठीक है. निज़ाम आप गूगल डॉक्यूमेंट से चेक कर लें. अजहर और हुसैन आप दोनों भी जरा अगर बता दें तो निज़ाम एक ही दफा चेक कर लेंगे. मैंने आप तीनों को अनम्यूट किया हुआ है इसमें. Azhar Bilal and Hassan Saleh.
यस सर, अनम्यूट आपने करवा दिया है। फॉर कंफर्मेशन कि हमने किस जगह भेजा है अपना एथिकल डिलेमा, आया ऑन ईमेल और ऑन Yes, yes. it's been shared on the link that was shared by Nizam, not on the email address, Oh, the other one, Google Forms. fair enough. So Azhar Bilal का भी निज़ाम चेक कर लीजिएगा on the Google form. हसन आप भी बता दें. जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है उनको ईमेल कर दिया था मेंबर्स वाले पे, जीमेल जो अकाउंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। निज़ाम आप प्लीज हसन साले का भी चेक कर लें, वो आपके ईमेल एड्रेस पे आया हुआ है। एंड इफ यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल हैव काशिफ इजाज़त document up on the screen, please. All right, so while Nizam is retrieving the document, Kashif, if I can ask you to very briefly describe this ethical dilemma. And by the way, all right. So, okay. I was about to say that, it's best that in such situations we do not name organizations or name individuals. अच्छा, इसमें Yeah. मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के क्लाइंट को मैंने नहीं मेंशन किया कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन की वजह से। ठीक है, that's good, that's good. G Kashif, so will you like to explain what happened as a as an approach? मैंने जब केपीएमजी में एज एन एडवाइजरी ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो फर्स्ट असाइनमेंट मुझे ग्रांट ऑडिट की मिली थी। WFP की ऑडिट से ग्रांट थी जो पेशावर में उन्होंने एक एनजीओ को दी थी, वो आगे अपना न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे काम करते थे। तो उसमें हुआ ये कि जब हम 2 टीम मेंबर थे, हम एक मेरे सीनियर थे और दूसरा जो है मैं था। तो जब हम ऑडिट के उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचे तो बेसिकली हमने अपना डेटा कन्वे पहले से किया हुआ था उनको कि क्या-क्या चीजें हमें जो है रिक्वायर्ड होंगी। तो जब हम उधर पहुंचे तो शुरू में तो वो जिस तरह टालते रहे कि ये आपको भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, तो यही करते रहे। सेकंड डे पे जो है फिर हमने जो है जो थोड़ा बहुत डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया वो हमने उस पर वर्किंग की, मगर अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल साइज वो उसका तकरीबन 20% था, बाकी 80% जो है वो मिसिंग था। तो मतलब हम उनसे कॉन्स्टेंटली मांगते रहे, तो डे एंड पे हुआ यही कि उन्होंने जो है हमें कह दिया कि जो चीजें आप मांग रहे हैं वो हमारे पास तो नहीं है, आप ऐसा करेंगे हम अगले वीकेंड पे आपको जो है ट्रिप करवा देते हैं नदर्न एरियाज का, और ये आपके हमारे पास आप कुछ डिमांड करते हैं, आपको कोई लैपटॉप वगैरह चाहिए या इस तरह का कुछ चाहिए तो वो आप हमसे ले लें और अपना सैंपल साइज जो है वो एडजस्ट कर लें। जो मतलब कि डॉक्यूमेंट हमने आपको दिए आप इन्हीं में से जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके जो है वापस चलाएं। वो ऑब्वियसली कि कोड ऑफ एथिक्स में इससे कि काफी जो है इस पे इम्पोर्टेंस दी गई इंटेग्रिटी वगैरह पे, तो हमने आपस में डिस्कस करके फिर इमीडिएटली अपने डायरेक्टर को कॉल की कि आगे जो है हम क्या एक्शन। तो उन्होंने हमें बुला लिया कि आप जो है वापस आ जाएं, इसको फिर हम सीनियर लेवल पे जो है परसू करेंगे। तो बस फिर हम इस कॉन्वर्सेशन के आधे घंटे बाद जो है वापस इस्लामाबाद आ गए और इन पर्सन भी डायरेक्टर को जो है the audit was discontinued, yes? जी Or was it qualified? नहीं, बाद में हो गया था, कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो गई थी, मगर जो है वो जरा ऊंचे लेवल पे जो है बात चली गई थी। ठीक है, so it was reported. अच्छा काशिफ, अगर मैं आपसे चंद सवालात पूछूं अब, and then I'll appreciate others who are present in the group also to ask their questions don't ask intriguing questions. Don't try to dig out further information about what Kashif has disclosed. I think Kashif ने एक sufficient detail में एक incident report किया है that there was a deficiency in the records provided by the organization in question, and they were unable to produce those records, and then they tried to bribe. They tried to offer bribe. Kashif, my question to you will be: you were a trainee at that time, is that right? Yes, right. Okay. You are now a member, right?
जी जी Okay. So if the same situation happens again, will your response be the same or will it be different? माय रिस्पांस वुड डेफिनेटली बी द सेम, क्योंकि Right. जो है एक चीज आप में काफी दफा इनकलकेट की जाती है, और ये मैं सिर्फ एसीसी का नहीं कहूँगा, सारी प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं कोड ऑफ एथिक्स में सारों की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो Hmm. मैं सीआईए भी परसू कर रहा हूँ। इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो है आपको हर बॉडी के एथिक्स कोड ऑफ Exactly. एथिक्स में So मिलेगा। let me clarify my question. So, I mean, my question is not that, as a member, you would have gone the other way. Yeah. I'm sure your response, even as an ACCA member following the code of conduct, will still be to report the matter to your organization. Yes? जी यस। Right. As an ACCA member, do you think that you could have gone a step ahead, or was this your, your limitation? You would have reported it to your line manager and let them do what they were, what they would like to do. आई आई थिंक जो मैंने स्टेप लिया था वो सफिशिएंट था। इससे आगे Hmm. तो आप तभी जा सकते हैं कि अगर आपको इस तरह की अप्रोच कोई एसीसी मेंबर करे तो आप काउंसिल को अप्रोच करेंगे, कोई True. डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, मगर क्लाइंट के थ्रू तो आप ऑब्वियसली अपनी सीनियर मैनेजमेंट को कि ये Exactly. ऐसी Exactly. अप्रोच जो है I think इन्फॉर्म that's करें। very clear. That's exactly what I was trying to, what response I was looking for. You did the right thing. The first step is always inform your line manager. Yes. Um However, as an ACCA member, if it is, if it is in your jurisdiction, right? You may, I mean, just widely looking at possibilities, you could have gone on to check the individuals who had fiddled with the records or had not produced enough records. Were they qualified accountants? Yeah. Do you think in your own organization when you came back, would you have followed up, with the decision that was taken? So of course, as a trainee, you did the right thing, and that's where the limitation lies. But as an ACCA member, let's suppose now that you are in a senior role, uh, I'm just asking you to imagine if, let's suppose, a junior who's reporting into you, he goes on such an assignment, comes back and reports it to you, what will your action now be? I mean, that's the difference I was looking for. I mean, as an individual who is under training, you did the right thing, you reported the matter. But now, as an individual to whom the matter is being reported, how would your response? What would your response have been? आई थिंक कि जब आप थोड़ी ज्यादा सीनियर पोजीशन पे जाते हैं तो स्टेक होल्डर आपके ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब जिस लेवल Hmm. पे मैं था तब तो मेरे लिए सिर्फ मेरे ऊपर जो भी सुपरवाइजर या मैनेजर होंगे Exactly. सिर्फ वो होंगे। मगर जब आपका लेवल Yes. बढ़ जाता है तो इसमें ऑब्वियसली एक तो इंगेजमेंट क्लाइंट है और एक दूसरा है जिसको आपने रिपोर्ट देनी है, जो इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होगा। तो आप Hmm. उस साइड पे भी अप्रोच कर सकते हैं कि जिस तरह जो है Hmm. इस क्लाइंट Yes. को जो है हमने ये सिनेरियो हमें वहां मिला है, तो Yeah. आप मतलब क्लाइंट की भी जो हाईएस्ट मैनेजमेंट है उसको Hmm. आप जो डोनर है उनके साथ बैठ के जो है डिस्कस कर सकते हैं कि इस तरह की अप्रोचेस जो है हुई हुई हैं। तो Yeah. इसके So, अलावा जो है Kashif, in this case, I think you once again you use the right term here. I mean, you look for all the stakeholders involved. जी You look for the sensitivity these stakeholders. Yeah. यस Do you think at any stage the interest of your own organization comes into question as well? इंटरेस्ट ऑब्वियसली थोड़ा आ जाता है, क्योंकि आपको क्लाइंट भी जो है वो भी रिटेन करना होता है, वो भी आपका एक स्टेक होल्डर होता है। Exactly. तो Hmm. आपको चीजें जो है बैलेंस करनी पड़ती हैं कि सारों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई भी हो रही हैं और आप अपनी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज भी ना कर रहे हैं। और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू को भी डैमेज होने से बचा रहे हो, जी विदाउट टेकिंग any setbacks to your own यस। organization. Very well, thank you. Anybody else likes to ask a question from Kashif? So, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप questions dialog box में type in कर दें. I'll read out the question from there.
I am assuming that the hand raisers are all those people who want to share their own ethical dilemmas as well. Okay, so Mohammad Arshad ka bhi question hai. He's saying, why did you not retrenched from the assignment and inform the audit firms about the organization and its malpractices? I think, Arshad, that's exactly what Kashif has pointed out, that in his capacity as a trainee and as a resource on the ground, I think his responsibility was to inform the line manager, which is 110% required in all circumstances as the first step, and then let the organization take the decision. I mean, not just the line manager, the organization take the decision. So if the organization had decided to withdraw from the audit or had decided to report it to the World Health Program, that is something that the organization had to decide. However, in his capacity, I think Kashif did the right thing. Kashif, would you like to defend that? जी मैंने वही मैं कह रहा हूँ, इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जो मेरी कैपेसिटी में था वो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा कि आपकी पोजीशन जिस तरह इंक्रीज होती रहती है उसी तरह स्टेक होल्डर बढ़ते रहते हैं, मगर जिस पोजीशन में मैं था मैं सिर्फ एक ही जगह रिपोर्ट कर सकता था जो कि मेरे सुपरवाइजर और मैनेजर से अपने फॉर्म में। Exactly. That's what I've also acknowledged. अच्छा जी, नमाज ब्रेक अरसलान, हम नमाज ब्रेक 7 to 7:10 ले चुके हुए हैं. अगर आपने नहीं पढ़ी हुई नमाज तो you'll have to go and say your own prayers now. मैंने पिछली दफा भी अनाउंस किया था कि अब चूंकि नमाज ब्रेक कराची में 6:58 पे नमाज अजान हो जाती है तो हम स्टार्ट ही 10 minutes लेट करेंगे. So we've taken the नमाज ब्रेक already. अच्छा जी, तहमीना, काशिफ तहमीना का क्वेश्चन है, is there a win-win situation where when there is self-interest and the firm is not going to compromise that interest? Ji Kashif, your thoughts on this? A win-win situation. Look for a win-win in this case. विन-विन सिचुएशन भी मैं मेरा ख्याल है पहले उसको भी आंसर कर चुका हूँ कि आपके जो है स्टेक होल्डर कई एक होते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं, आपको क्लाइंट रिटेंशन पे भी जो है वो जोर देना पड़ता है कि आप अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो है एक रीजनेबल एश्योरेंस दें, जो स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप वो सेटिस्फाई भी कर रहे हो, और अपनी जो है अगर आपको कोई फ्यूचर में उस क्लाइंट से काम आना है तो ये ना हो कि आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट हो कि आपका काम आना भी उस तरफ से बंद हो जाए. तो ये आपको बैलेंस करना पड़ता है कि आप चीजें जो है कोई आप पे जो है मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना बन जाए आपकी रिपोर्ट की वजह से, और जो है ऐसा काम हो कि क्लाइंट भी जो है आपका रिटेन हो जाए. ठीक है. And I think if the win-win comes at the cost of compromising on an ethical stand, I think that is, I would not call it a win-win, right? A win-win in this case, for example, could be that yes, the organization decides to dig up, if let's suppose the NGO decides to dig up that information and share with the auditors at another date. I mean, that can be one possibility. I'm just thinking out loud. That could be one possibility. But if the organization decides that no, we do not have that record, we will not be able to produce it, and let's say the firm, the auditor then decides to shelve that concern altogether, that is again not a win-win. I would see that as a compromise as well. अच्छा चलें, मलिक शहबाज हुसैन एक सवाल पूछे and saying, why did you have to decide together later in the day to report it to the seniors? Why not on the spot? Was there any difference or differing opinion in the audit team or seniors? नहीं, लेटर इन द डे का मतलब यही है कि अप्रोच ही जो है वो लेटर इन द डे की गई थी. मतलब सुबह हम उनसे वेट करते रहे, इंफॉर्मेशन देंगे तो मतलब दोपहर शाम के बीच के वक्त में जो है उन्होंने ये अप्रोच की थी. इस वजह से मैंने वो लेटर इन द डे जो है लिखा. ठीक है, प्रिसाइज. So
ओके सो अगर मैं शहबाज के क्वेश्चन को रीफ्रेज करूं, if let's suppose you are one individual in a team of auditors, along with the supervisor on the ground, right? Would you have reported it to the supervisor first and then had taken it to the partner or the manager, or would you have reported it directly to the manager sitting back in Islamabad maybe? रिपीट कर देंगे आप क्वेश्चन? So what I'm saying is that if let's suppose you were an auditor on the ground and you had an audit senior with you as well, yeah, and let's suppose another individual who's an audit manager sitting back in the office in Islamabad, would you have reported the matter straight to the manager in Islamabad, or would you have reported it to the audit senior who was with you there? I mean, the chain of command. चेन ऑफ कमांड यही है कि आप जिस तरह सीनियर है, मैं इस असाइनमेंट पे जूनियर था, मेरे साथ एक सीनियर था, तो मगर हम दोनों साथ ही थे इकट्ठे ही जब मतलब अप्रोच हुई थी। मगर अगर मैं अकेला होता तो जो लाइन ऑफ प्रोग्रेशन है मैं उसी के थ्रू चलता, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता, फिर आगे देखता कि उन्होंने आगे जो है किसको रिपोर्ट करना है। एग्जैक्टली, आई थिंक काशिफ आपने ये सेकंड स्टेप जो है ये बहुत अप्रोप्रिएटली है ये step explain किया है that your first instinct should have been to discuss it with the direct line manager and then follow it through, see if it has been reported on, yeah, and has been taken up. Good. I think okay, Umair Khalid कह रहे हैं Muhammad Umair Khalid, can we say that such situation is an ethical dilemma? It definitely is an ethical dilemma. You had identified a possibility of a fraud, not exactly a fraud, but a possibility of a fraud. You inquired about it. You were offered a bribe, and that's the first defensive move. You were offered a bribe, right? And at that point, you report the matter to your to the seniors in your organization. This definitely comes in. I mean, offering bribe is definitely comes in as an ethical dilemma. Okay, Muhammad Arshad, can you please switch on the questions box? All right, the question box is on already. All right, so I think a lot of questions around the win-win situation. I mean, what would have been a win-win situation? I have already described, that in an ethical dilemma, a win-win is not exactly a compromise on the ethical issue. Okay, I do not see a compromise on an ethical issue to be considered a win-win. Okay, a win-win would be that if let's suppose your organization does not have to bend backwards or change the rules in this particular case, does not have to compromise, yeah, and at the same time the other organization without suffering any financial or credibility loss agrees on. I mean, it number one, it confirms to you that it did not lead to a fraud and it was an omission by, let's suppose, a particular individual. I'm only thinking hypothetically in this case. We're not there in that situation ourselves, but I'm just extrapolating what could a win-win situation be. So the organization agrees, for example, the NGO in this case agrees to provide alternate record or an alternate mechanism of providing that evidence that it was not exactly a fraud. However, the recording, there were omissions in the recording, and therefore allows further drilling down into the subject matter. And I mean, I would see that as a win-win solution, and definitely not stepping back, and definitely not reducing the sample size as a win-win situation in this case. G. Kashif, would you like to disagree or agree? I'd like to agree with what you said. तो मैं भी यही कहूँगा कि प्रिंसिपल्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए, और बेस्ट जो आपका पॉसिबल आउटकम यही होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिव. Okay.
Exactly. Great. Thank you very much. Nizam, if you can have the questions window on, please. We've read the ethical dilemma. Kashif, thank you very much. Good case reported. Thank you. Although it's a very typical case, but इससे difficult situations भी होती हैं. So I'll narrate one to you. अच्छा जी. So okay, Tehmeena का एक last comment मैं पढ़ देता हूँ. She's saying, I have seen firms increase materiality level and call it a win-win, but it is actually a compromise of integrity. Yes, that's also true. That's also one situation. It is a compromise. Okay, let's move on to our next individual. Azhar Bilal ने second number पे hand raise किया था. Nizam, if you can open up Azhar Bilal's document. And Azhar, I think you've already been unmuted. If you can unmute yourself and describe what the dilemma was. Yes, thank you, sir. Okay, so I'll try to be brief because I've written the whole 300-word dilemma in front of you. Okay. हुआ ये था कि in 2016 जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हायर हुआ था, वहाँ पे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था जिसने मुझे इंटरव्यू किया और अप्रूव करवाया मेरी सिलेक्शन को, वो विद इन लाइक 2-3 मंथ्स के पीरियड में वो ट्रांसफर हो गई उसकी किसी और जगह. तो मेरे साथ फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काफ़ी रोल आ गया. ही वाज द वन विद whom I worked. And 3 years we worked very well. I learned a lot from him and he became a sort of like mentor with me. And after 3 years, the previous chief operating officer, जो chief operating officer थे वो वापस आ गए, वो reinstate हो गए, वो एक और project से वापस इस project पे आ गए. And when he came back, things started turning ugly. Chief financial officer और chief operating officer के बीच में differences आ गए काफ़ी. Relating to managerial style of work and other stuff. I won't name or go into further details, but one of the problems that then arose is that chief operating officer ने मुझे summon किया और मुझे कहा कि you are not reportable to the chief financial officer. आप reportable हैं मुझे. एंड उन्होंने मुझे बकायदा ऑर्गेनोग्राम कंपनी का उस जमाने का अपने टाइम का जो बनाया हुआ था वो निकाल के दिखाया, जिसमें देयर वाज नो डाउट दैट आई वाज रिपोर्टेबल टू हिम. ऑल्दो आई न्यू दिस फैक्ट फ्रॉम स्टार्ट, बट जो बीच में जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आए थे उनको ही सॉ थिंग्स डिफरेंटली. ही रियलाइज्ड के माय एरिया डिड रिलेट टू माय एरिया वाज, मैं क्लियर कर दूं, रिलेटेड टू रेवेन्यू. मैं रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज फर्दर किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है रेवेन्यू, इन चीज़ों को लुक आफ्टर करता था. बट विद द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आई वर्कड इन डिफरेंट कैपेसिटीज, नॉट ओनली रेवेन्यू जनरेशन बट टैक्सेशन, अकाउंट्स, ऑडिट, एवरीथिंग. मतलब जो भी फाइनेंस में होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, प्रेजेंटेशंस, हाई लेवल, यहाँ तक के मतलब when the chief financial officer used to be on leaves, I used to take up that mantle. मैनेजमेंट मुझे लुक अप टू करती थी कि आप लीड करें फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन हिज एब्सेंस. So things took a U-turn when the chief operating officer returned, the previous one, and he said, okay, you're not going to work with him anymore. जो कि मेरे CFO ने resist किया इस move को. उसने कहा कि नहीं, I will not allow such thing to happen. This guy is with me and ये हो ही नहीं सकता कि chief operating officer के साथ ये काम करे. Both sides clashed and मुझ पे सारी बात डाल दी गई. ओनस मेरे पे आ गया कि आप बताएं. Yes. मेरे पे आ गया. Both of them sat down and I was sitting in the middle of them and they asked me, okay, tell your opinion. With whom are you going to work? And I knew what the implications were. Either side I took, I will face some adverse reaction. Yeah, from the other side. Yeah. So prospect मतलब foresight रखते हुए मैंने ये देख लिया कि obviously HR डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ इंक्वायरी करेगा बिकॉज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का पलड़ा काफी भारी था. आई वुड जस्ट गिव अ हिंट ओवर हियर दैट मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी एक कर्नल था. सो अ सिविलियन डिड नॉट स्टैंड अ चांस जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था. तो सीइंग द वे थिंग्स वर गोइंग एंड इन विच डायरेक्शन दे वर रनिंग,
So I don't know if you can call this an ethical dilemma. It's not a simple, straightforward one. It's Yeah, it was a chain it's of a very command. complex one. Yes. तो प्रोफेशनल बिहेवियर आई गेस आप लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. जो एक ACCA मेंबर को ऑब्जर्व करना होता है, ही शुड मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर एट ऑल टाइम. सो what I did is that I pointed out to the chief operating officer that, sir, functionally chief financial officer is my head, functionally speaking. I don't know what the organogram is saying. Maybe it was constructed in a hurry, but traditionally speaking, this area does fall into the finance department of the company, of any company, usually in any company. So even though if over here you're showing me an organogram that's not showing it under CFO, but instead under you, I'm willing to work under you. I have no problem. I'm not hiding anything from you. मैं आपको report कर रहा हूँ. But don't ask me to go against the CFO or not report to him, because functionally he is my head. And ऐसा ही होगा कि functionally मुझे उसको report करना पड़ेगा. So that's how I handled it. It wasn't one meeting, it was several meetings, several occasions, and I had to pacify both of them at several different occasions in different manners. But in the end, pacify them I did. So shukar hai, alhamdulillah ke, but it was a very tight rope, but I satisfied them both. Okay, thank you very much for sharing this incident. In my opinion, this is more of a conflict within the organization, and therefore conflict management techniques to be adopted and used. I mean, so far, I mean, what you've reported, I don't see any ethical issues in it, yeah, at the moment. Had it been that, let's suppose the chief operating officer or the chief financial officer were trying to cover their bases for any malpractice by your presence there, and that's exactly why they wanted you to continue working under their chain of command, under their command. That could have been an ethical dilemma, but in this case it was a conflict. Yeah. And going forward, we are going to look at conflict management, and we're going to look at negotiation skills, both of them separately. Yes, we are going to talk a lot about win-win situation as well. So what can be a win-win in different situations, जो कि हम अभी already exercise कर रहे हैं इस वक्त. So ये मेरी personal observation है. Let's hear from other members also present in the group on what do they think. So does anyone want to make a comment? Rizwan Arif has made an interesting, funny comment. Yes, they should fall in professional behavior. That is what Azhar Bilal has already pointed out. It can fall very well under professional behavior. But we malpractice इसके अंदर involved नहीं थी. It was actually defining the chain of command, and not just for this particular incident, for all future references also. Omer is saying, agreed with you, sir. It's managerial issue. How about a conflict? Yes. Hassan Saleh is saying, how you resolve the situation, that's the key. G, so question to you by Hassan Saleh. Azhar, would you like to answer? जी सर. हसन, जैसे मैंने आपके सामने क्या considerations थी, and then the decision. कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी थी सर. इसमें आपका भी थोड़ा वो जो आपने ऐड किए कमेंट्स के, मे बी देयर वाज नो एथिकल इशू, बट मैंने जो फोरसी किया कि एथिकल इशू अराइज हो सकता था. किस तरीके से कि CFO एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वर बोथ so against each other at that point of time that they were looking for a way to get the other one out of the organization, and they were looking for an error in each other's workings or doings of way of running things. So मैंने जो foresee कर लिया कि दोनों चाहते थे, especially the chief operating officer, that I provide them with some sort of evidence against the other in relation to work. I foresaw that, and it's not just me foreseeing stuff. It actually did happen. I can bet on it. किस तरह हो रहा था और जगहों पे भी वो कर रहा था chief operating officer ऐसे ही. So what I did, Hassan, was I played both sides. I sat with the chief operating officer, and I assured him that in no way I am going to harm the organization. The interest of the organization is what matters to me. मेरे लिए
petty disputes matter नहीं करते, मेरा काम मेरे लिए matter करता है. So as long as I'm delivering you the work that you require, or whatever you wish of me, I'm delivering that, then there should be no issue. उसका कुछ demands थी मुझसे chief operating officer की. उसने कहा कि you should not work in other capacities. You should not work in finance, in taxation, in accounts, in audit, in any other place where CFO places you. बस जो मैं आपको काम दे रहा हूँ आप वो करें. तो मैंने अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को समझाया, उसको एडवाइस किया. मैंने कहा देयर इज नो नीड टू गो अगेंस्ट द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. कॉन्फ्लिक्ट करने से कोई मसला हल नहीं होगा. इफ ही वांट्स मी टू डू ओनली दिस वर्क, let me focus only on the work that he wants me. Maybe some good will come out of it. Just see how things run out. And it was a compromise of sorts by the CFO as well. उसको समझाया मैंने, उसको पैसिफाई किया, उसको बड़े टेक्निक से सॉफ्ट तरीके से सजेस्ट की चीजों को, उसको मतलब चीजें दिखाई कि कॉन्फ्लिक्ट करने से कोई फायदा नहीं होना. शुक्र है कि उसको समझ आ गई ये बात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को. He saw the wisdom in it and he allowed me to work only on the area for which I was appointed and not in any other area, not even in audit coordination, not in any way else did जिस तरह chief operating officer चाहता था. And I repeated the same stance again and again to the chief operating officer. उसको मैंने बताया बार बार कि मैं किसी और रोल में अब काम नहीं कर रहा. He questioned me constantly, what are you doing, what are you doing? I said, I'm doing your work, I'm not doing anything else. So it was a daily fight, but I fought daily. Right. Nizam, if you can have the questions window in front of us, please. आप जब हम केस पढ़ लिया करें तो आप questions window सामने कर दिया करें, because a lot of people are asking questions at the moment. Thank you very much. So let's very quickly look at a few other questions. हसन का हमने क्वेश्चन देख लिया था. रिजवान शहजाद कह रहे हैं जी, कैन बी सी क्वेश्चंस कमेंट. हाँ जी, आगे सामने आपके. उजैर अहमद is saying scenario seems like a situation discussed in the last session, dual reporting line issue. I agree and I'll make a comment about this. Asif Islam says that, Sir Haroon, how would you approach the same situation? We'll look at that. I think there were possibilities earlier on, when the role had been assigned, there were possibilities earlier on to clarify a few things. And they can isko bhi describe karte hain. Rizwan Arif, here is a dilemma when he asks for confidential information against the CFO, actually to harm him. Yes, exactly. That's what I was also thinking. It यहाँ पर आके थोड़ा सा, it becomes a little, inclined towards an ethical issue. So, but अभी तक ये assumption है, जैसे अभी अजहर ने कहा है कि, I mean, there were indications that he would do this, yes, and there were some indications that he had done this in the past as well. Not all public sector organizations, or not all large organizations, but this is quite rampant, unfortunately, in the corporate culture as well. So people try to dig up or pressurize individuals to look for secret, confidential, ethical, unethical dilemmas, issues about particular individuals. But again, your role as an individual, that is very, very, sort of important in such a case. So do you reveal such information, or do you hide such information? Who do you reveal it to? So all that is very important. We'll talk about that. Let's go on further to explore a few more questions. Malik Shehbaz Hussain keh rahe hain ji, the normally job description defines the reporting line, which is approved by the HR department. You should not have been put in this situation. Why the HR was not involved? Precisely, Shehbaz, मैं exactly ये कहने वाला था कि अगर इस situation को foresee कर लेते, तो ahead of time इसको raise कर सकते थे with the HR that, look, I am being assigned this new role, and who will I be reporting to? मैं आपको एक अपना incident सुनाता हूँ, and I will once again not name organizations or not name names. I was working for one of the biggest chains of schools in Pakistan, and as a center manager. And one day I receive a call from the chief executive that my such and such relative, who happens to be
the director of finance in the organization. He needs your help with the particular software that he's trying to use, and we understand that you have those expertise, so can you go on and work with him? So it was a clear instruction. I went on. Was a small project. I helped the director of finance, and the matter was over. I reverted back to my original position. After a few months, this director of finance, who was a relative of the chief executive, decides to leave this organization as he was being offered a very lucrative position in one of a public sector organizations. And so he approached me once again that I am moving on to this organization, and I want you to come along with me and work with me in this organization. You'll get exposure to, various banking chiefs and senior staff in various banks, and therefore that'll be great exposure for you, etc., etc., and along with other salary benefits and all. His one condition was that you must not tell the chief executive of the organization that I have asked you to come along. You just have to give your resignation without any notice to be served, and from the next day join me as in this new organization. So that was the dilemma. This guy was a political figure as well, so was a bit of a difficult situation. I naturally had to decline. I had to say that, look, it will not be ethical if I, without even informing, by not even serving the notice, I just disappear or I just tender my resignation. But it will not be ethical. ओमान में अगर प्रेयर ब्रेक है तो उस्मान आप you can go on and say your prayers. अच्छा जी, अब मैं very quickly and summarize this. So eventually this individual dropped in at my residence, and he called in my parents, and I was a very young lad at that time, fresh into the profession, and he called in, look, your son is declining a very good offer, etc., working with very renowned politicians and bureaucrats and senior officials in the bank. You must tell him to come along. And I got a bit of a pressure from my family also. What do you think should have been my decision in this case? I'll tell you what happened in the end later on, and that was a lesson that I learned. Yes, and but I'll leave the situation here at the moment and continue with the questions that are being put up. और मैं आखिर में आप लोगों से पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए था. चलिए, तहमीना कह रही हैं, I also consider this as a non-ethical issue, but more of a performance issue, as the professional behavior involves actions that discredit the profession as a result of non-ethical practices. Muhammad Arsalan Aslam is saying you actually implemented conflict management techniques. Yes, all right, I agree. Akib is saying great effort by Azhar to resist such kind of pressure. Most of us gave in. Yes, exactly. Tehmina is saying great conflict resolution technique. Well done, Azhar. So a good comment coming your way, Azhar. Usman Thank you. Thank you. Right? Bob is saying you were Naujawan kahun. Acha, happens with everyone. Yeah, exactly. It happens with everyone. And by the way, ये बहुत बड़ा एक blame भी है ACCAs पे. मैंने नया ACCA join किया था back in 2005. I ended up sitting with the partners at different firms, renowned firms, and the only one thing that they used to complain about was that we've trained individuals who are ACCA trainees. We give them assignments, and one fine morning we find out that the person hasn't turned up, and upon asking, he will verbally tell us
that exactly को अब मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ. He'll just tell us the next day or verbally only that look, I've got a better offer and I have to move on. And that is where the reputation of the organization ACCA that suffers, and that is why जब ये situation आई थी जिसमें apparently there was a restriction put for chartered accountancy firms to hire ACCAs. This was that situation जहाँ पर firms ने भी कुछ थोड़ी सी arm twisting की थी ACCAs की. But nevertheless, I think that was a reputation that we were carrying. अब काफी हद तक ये improved है, लेकिन अभी भी मेरी एक suggestion होती है, वो ये है कि whenever you join an organization, if you're not offered a contract, insist on one, right? Sign that contract, read that document, and once you've signed it, then you're committed by it. Okay. Once you've signed it and then you do not hold by the terms of the agreement, then then it turns out to be an ethical dilemma, and that is what is reportable to the professional conduct department at ACCA, right? And that is what then the professional department, professional conduct department then investigates and therefore then has to see who was at fault. Okay? So just remember that. ठीक है जी? चलें, let's move on. Okay, so Azhar, do you think in your case, when you were assigned this role, when you were told that you will now be working with this particular individual, was there a clear-cut instruction given to you? Was there a job description laid out? Was there a reporting line laid out or not? You're talking about the chief operating officer के उनके साथ कोई मतलब इनके साथ work करना है. जब आपने join किया, you were reporting to the chief operating officer. Then you were assigned to a project, yes? And that was let me explain. हुआ ऐसे कि when I was assigned, I was hired, chief financial officer उस वक्त था ही नहीं कोई. They were also looking for a chief financial officer. So they clear cut told me that you're going to be working with the chief operating officer. मतलब जो बंदा था वो खुद ही interview मुझसे कर रहा था, chief operating officer. He said you're going to be working with me on this and that. So after hiring me and getting me approved all the way up to the level of DG level तक उसने जाके मेरा interview मुझसे करवाया and he gave, उसने support भी मुझे बहुत दी सारे process में. After that he left for like 2-3 months का साथ था, उसके बाद वो चला गया. The new chief operating officer, he did not see things that way. He saw me purely working under the CFO. उसको यही लगा कि CFO के अंदर ही इस बंदे को काम करना चाहिए. He did not raise any issues of any sort. We had minimal interaction with the chief operating officer for like 3 years. And after that, वो बंदा वापस आ गया, chief operating officer पुराना वाला. जब वो वापस आया तो बल्कि उसने मुझे और भी बड़े ऑफर्स की. he told me that you are my guy, मैंने तुम्हें रखा था, you are supposed to work with me. And he used to sit me down, give me sessions, told me that once I pick someone, I don't leave his side and I want you to stay with me, stick with me. And काफी उसने मतलब दूसरे tactics भी use किए कि CFO की बुराई कर रहा है या ये इस किस्म का बंदा है, उस किस्म का बंदा है. तो बहरहाल in the end I had to think rationally in all of this. I did not have to think emotionally. Exactly. Very well said. Exactly. चलिए, और एक और सर एक चीज, one last point sir. I think you also raised this issue and someone else also questioned कि HR से क्यों नहीं आपने clear cut ये अपना role पता करवाया. तो जवाब इसका ये है कि HR इस organization का was tilted heavily in the favor of the military people, the chief operating officers. There was no point of asking them anything. I think that should clarify for I don't want to say that military organizations work differently than the corporate sector organizations. That's natural. And in any military organization, the tilt of the policies or decisions is towards people in service.
and people who have been ex servicemen rather than civil officials. तो ये एक टिल्ट होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, और ये आपको बाय द वे जो पब्लिक सेक्टर में भी जो CSS ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें भी आपको ये नजर आता है। तो इन लॉबिंग हुई होती है, बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई कैन नॉट से कि वो बिल्कुल दे आर फ्री ऑफ सच सच इश्यूज। जो अभी वर्ड यूज किया अजहर ने, you are my guy, I brought you into this organization, ये बड़ा एक एक कॉमन टर्म है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी नजर आती है। बट आई थिंक इसके अंदर जो 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 एथिक्स का और प्रोफेशनलिज्म का जो रोल है वो डेफिनेटली यही है कि आप even if you had to switch sides in that situation, divulging any information about a particular individual with no particular necessity, and information that was purely within the framework of the responsibility assigned to that individual. अगर उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट की जानी है या उसको किसी जगह पे मिसयूज किया जाना है इन फ्यूचर, that is of course not professional, and that information should never ever be divulged. However, if there is a malpractice reported in such an individual, of course, and there's an audit or there's an inquiry going on about that individual, in that case you have to, as an organized part of the organization, comply by the by the requirement of the case. So that's what I was going to allude to. चलिए अब हमारे पास आई थिंक हमने दो इंटरेस्टिंग केसेस डिस्कस किए हैं. Hassan is back with us. Hassan, just to summarize what we've Assalamu alaikum. Hassan B, just to summarize what we've discussed so far is we've picked up on two stories of ethical dilemmas shared with us. Very interesting ones, और उसके ऊपर हमने डिबेट भी की, डिस्कशंस की. जो पिछले वाला केस था जिसमें one of our members during the training period was sent to an organization for an audit, and there were some malpractices or there were some missing documents discovered, and the auditors were offered a bribe, etc., but they reported the case to the line manager, and then the matter went on. So हमने ये भी realize किया कि in such a position where you're reporting to a particular individual, the best thing is to report to the line manager. But if you are the line manager and such a thing is reported to you, what would your responsibility be? So what I'm trying to allude to is that as a member now, there could be situations where a person who is working under your command reports a matter to you, and therefore what would your course of action be under the circumstances. So हमने इस तरह की एक सिचुएशन डिस्कस की, और दूसरी सिचुएशन जो अभी आपके सामने डिस्कस कर रहे थे अजहर बिलाल के केस में. So two senior officials, and the role that Azhar was performing was most definitely falling into, or naturally falling into, the work of the CFO. However, due to some individual conflict between the two individuals, the chief operating officer was continuously pushing Azhar to stop working for the CFO and to continue working the chief operating officer. So again, an issue, a conflict that was there, and I think handled very well by Azhar in this case. So Hassan, over to you if you want to discuss the ethical dilemmas further, if you want to go on with the conversation about professional skills today. Ji, definitely. Or meanwhile, I will request Nizam if he can give me the controls to share screen. So ethical dilemmas, guys, pehle to apologies. I was not expecting this urgent commitment, a personal family commitment. So sincere apologies for being late. For the remaining 1 hour or 1 hour, 10 minutes, I'll try to be as value added.
और ये हमेशा ज़हन में रखें कि जब आप कोई भी हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, इट्स नेवर इजी, और वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि सिचुएशन किस किस्म की हो सकती है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो एथिकल पाथ को फॉलो करते हैं, प्रेफर करते हैं। बट अगेन, जितना आप डिफिकल्ट पाथ लेते हैं उतना ही रिवॉर्ड आपका ज्यादा होता है इन द लॉन्ग रन इन दैट प्रोफेशनल करियर. So, this is very much appreciable ke people who, take this path, they definitely will find difficulties. It's not easy, but again, since it's not easy, that's why the benefit one enjoys in the long run is always very good. सो यही मैं इसके अंदर कहना चाहूंगा अभी फिलहाल, और फिर जिस तरह हम कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो मीनवाइल मजीद हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और ऑब्वियसली मुझे अभी जो है वो आपकी स्टोरीज भी मिल जाएंगी। आई विल टेक अ रिव्यू ऑफ ऑल दीज इन ओवर नेक्स्ट 2-3 days, एंड देन ऑब्वियसली आई विल डिसाइड के टॉप 5 स्टोरीज किन की थी, in terms of expression, in terms of keeping in view all the timeless principles that we discussed the other day. So I hope you guys can all see my screen. Now let me just quickly include the question panel as well, so that let us set up and get going. Okay. All right. So I hope you guys now can see my screen and listen to me loud and clear as well. I would appreciate if you guys can type yes. Thank you, Hira. Others, please. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. So let's have a quick recap of what we discussed day before yesterday, and then we move forward. So हमने बात की लास्ट सेशन के अंदर के EPSM का जो मॉड्यूल है, it gives you two things. One is employability, which remains a requirement for whole of your professional career. The other is workplace effectiveness, which is of utmost importance if you want to grow within an organization. Secondly, we talked about, how does it make you employable? How does it make you workplace effective? It's by improving the trustworthiness of yourself, of your brand, because you learn skills and you learn ethics. You learn how to apply these timeless principles in different situations, and it gives you an opportunity to reflect on so many situations which you encountered in your past, as we were discussing this in the last 45 minutes. And then it gives you skills which obviously are very necessary in the modern age, and today more dwelling on the skill side of it. Then we talked about there is a difference between personality and character ethics. There is no harm in adopting techniques where you can manage your social image, but that should not be the only thing you should be after. Important thing is that you should apply these timeless principles, embed them into your behaviors in such a way that you don't feel pretending yourself in a situation, which usually is the case with personality ethics. And when you approach ethics as a character subject, definitely it has far-reaching consequences and on the very positive side. Then we talked about that
character is the destiny actually. So a lot of people talk about that, uh, the individual was very much blessed, and that's why probably he got what I have not been able to. And this is all about the destiny. I cannot do anything with my destiny. This is all written somewhere. So of course it is written. We all agree as Muslims, but at the same time, the God has also instructed us, has made this very much clear. The more you are pious, the more you follow piety, the more you follow these principles, the more I am going to reward you. And as I said, that if we all believe that God is so big and high, that he and we believe that he is the one who rewards everybody, then I think we should act according to the principles that the God has given us. So this was the highlights of the last session that we had with you all. Now, why do we need skills? So, I would like to have some quick responses from the audiences. Why do we need skills? And few skills I have written: digital skills, data analytics skills, leadership skills, team building skills, team management skills, creativity. Why do we need these skills? I mean, what is the urge to progress in life? Thank you, Rizwan. What else? To help sustain in the market. Thank you, Hira. To enhance your employability, right? To be prominent, makes sense. Please let the more responses come in. To act efficiently, to stay relevant. That's right, Arsalan. To differentiate, very spot on, Nakash. Thank you very much. Professional competence and due care. Thank you, Tamina. Couldn't agree more. To lead, obviously. Being unique, yes. To remain relevant, to be more productive, totally agreed. To be professional, to survive and thrive. Looking forward to give us all self-confidence. Yes, very important self-confidence. I'm going to talk about that. To perform well, to add value, to be able to engage in dynamic environment, to provide quality work, to enhance your brand. Couldn't agree more with all these. To excel, to create perception, to be leader rather than just follower, to excel in career, to be a smart worker. Very right. Thank you very much for all these very valid responses, and I'm very happy that we have a very learned audience with us, and it makes the task very easy when you have such a learned audience, to talk to. And I feel myself opportune by this audience. It is rare to have such an audience who are such learned in a way that they know already what is to be talked about. Now, if I talk about the skills, and if I talk about the reason why a finance professional or a professional accountant needs skills. So what I'll do is that for a time being, I will maximize this image so that you can see this table clearly. Yeah. So this is an extract from a recent article and report. I have also out and had requested Nizam to circulate that two-pager with you. Read that two-pager, and it will certainly give you motivation to the complete report. And if you want to excel, if you want to be different, if you want to be a smart worker, and all these statements that you just shared with me, let me be very honestly telling you that there is a lot of rich resource which ACCA produces every year, every month, and every time ACCA is working on some sort of research pieces which are very practical in their nature, which act as your compass. They navigate you. They are your lighthouse actually. And it is very crucial that you guys as members of ACCA keep following and keep reading these reports. The brand promise which ACCA has is always think ahead. We always pride ourselves in this fact कि हमारे जो members होते हैं वो think ahead कर सकते हैं, हमारे students, हमारे affiliates. So whatever talent we produce,
देयर इज अ कैपेबिलिटी अमंग दैट टैलेंट टू थिंक अहेड। और इस थिंक अहेड को सपोर्ट करने के लिए एसीसीए बहुत सारी रिसर्चेस प्रोड्यूस करता है। जो लोग इन रिसर्चेस को पढ़ते रहते हैं, जो लोग इनको गो थ्रू करते रहते हैं, वो ऑब्वियसली दे रिमेन ऑन द एज ऑलवेज। उनको हमेशा एक कंपेटिटिव एज होता है, बिकॉज यू नो किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर, वर्क प्लेस के ऊपर, जब आप अपने कॉलीग्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, दिस स्टार्ट्स हैपनिंग राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग। मैं आपको डिलॉयट की एक एग्जांपल देता हूँ। यूजुअली एसीसीएस के अंदर ये तस्वुर किया जाता है कि जब वो ट्रेनिंग फर्म्स में जाते हैं तो उनको आई कैप जितना वेलकम नहीं मिलता। और अगेन, जिस तरह हारून साहब भी और बाकी लोग भी एसीसीएस के ऊपर बात करते रहते हैं कि ये सिर्फ एक परसेप्शन के अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको दो वाकयात बताता हूँ डिलॉयट के, जहाँ पे दो मेरे बैचमेट्स गए ट्रेनिंग करने के लिए, और लिटरली विद इन अ मैटर ऑफ 6 months उनका जो प्रोटोकॉल था, उनकी जो रिसेप्शन थी, पार्टनर की तरफ से, सुपरवाइजर की तरफ से, ऑडिट मैनेजर की तरफ से, जो उनको जो है वो रिसेप्शन दी जाती थी, जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वो एसीसीएस के लिए, क्योंकि उस मेरा ख्याल है फर्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वहां पे कोई तकरीबन 30 के करीब एसीसीए ट्रेनिंग्स थे और 25 के करीब आई कैप ट्रेनिंग्स थे, तो टोटल 55 लोगों की टीम थी। और उसके अंदर ये जो दो लोग थे, इनका जो ट्रीटमेंट था वो बाकी एसीसीए भी एनवी करते थे और वो आई कैप के ट्रेनिंग्स भी एनवी करते थे। और रीजन क्या थी कि जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होती थी किसी कॉम्प्लेक्स मैटर के ऊपर, जब भी कोई टेक्निकल सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा होता था, जब भी कोई क्लाइंट की सेक्टर से रिलेटेड बात चल रही होती थी, जहां पर भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती थी, तो उनका जो इनपुट होता था वो बहुत रीजनेबल, बहुत कैलकुलेटेड, बहुत मेच्योर होता था। दूसरी चीज जो उनके अंदर बहुत फर्क थी, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था फ्रॉम माय स्टडीज टाइम, वो ये थी कि वो बहुत अच्छे पीपल मैनेजर थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उनके ब्रॉटअप ने भी उनको इस चीज के ऊपर सपोर्ट किया, उनकी उनकी जो सराउंडिंग्स थी उसने भी सपोर्ट किया। दे वर वेरी गुड विद पीपल मैनेजमेंट। मैंने नहीं कभी देखा कि उन्होंने किसी को बहुत अननेसेसरीली ऑफेंड कर दिया हो या कोई बहुत इम्पल्सिव एक्शंस लिए हों। सो दे वर वेरी गुड विद पीपल मैनेजमेंट। ये दो चीजें उनकी इतनी कंट्रास्टिंगली स्ट्रांग थी कि इन्हीं दो वजूहात की बिना पर उसी फर्म में जहां पे जनरेशंस और जनरेशंस आती हैं ट्रेनीज की, और ये एक तस्वुर होता है कि मुझे फलां से कम ट्रीट किया जाता है, और ये तस्वुर उस वक्त भी था जब वो दो लोग उस फर्म का पार्ट थे, उनका ट्रीटमेंट सबके लिए हैरान कुन था। शुरू में बाकी सब लोगों ने, क्योंकि मैं उसमें तकरीबन 30 एसीसीएज में से मैं 15 को जानता था, या तो वो मेरे जूनियर्स थे या बैचमेट्स थे, सो मैं समहाउ 15 लोगों को जानता था और उनसे मुलाकातें उन शुरू में बाकी सब लोगों ने, जो मेजॉरिटी थी उनकी, उन्होंने ये स्टार्ट किया सोचना, पार्टनर जो है वो इनके फादर का कोई फ्रेंड है, इनके फादर के फ्रेंड का फ्रेंड है, और वो उन्होंने अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली, जो हम सिफारिश और जो हम नेपोटिज्म की परसेप्शन हमारे माइंड्स में होती है, उन्होंने उसी परसेप्शन को यूज करते हुए, उसी पैराडाइम को यूज करते हुए अपने एनालिसिस करना शुरू किया और कंक्लूड कर लिया कि ये इस रीजन की वजह से ये बहुत पॉपुलर है। बट इफेक्टिवली एक कॉन्वर्सेशन मुझे याद है जो हम कैजुअली चाय पे बैठ के कर रहे थे, और वहां पे उन 15 लोगों में से जिनको मैं जानता था, 3 लोग मौजूद थे जो कन्विंस्ड थे, कंक्लूड कर चुके थे कि ये कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से इन दो लोगों को ये बहुत फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता है। और मुझे याद है कि उस कॉन्वर्सेशन के अंदर जब हम फाइनली, मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और कोई कनेक्शन इन दो इंडिविजुअल्स का नहीं है दूर दूर तक। सो वहां पे उनके लिए फिर ये एक आई ओपनर था। और वो बहुत ज्यादा एकदम, जिसको आप कहते हैं ना टेकन अबैक हो जाना, वो वाली उनकी सूरत हाल थी। रीजन क्या था कि उनके पास दो चीजें बहुत अच्छी थी जो कि मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुका था। एक, उनकी पीपल मैनेजमेंट एबिलिटी बहुत अच्छी थी नेचुरली, और दूसरा, पढ़ते थे वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ते थे, वो सिर्फ पेपर नहीं पास करना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ पेपर पास करके, ट्रेनिंग के 3 साल पूरे करके मेंबर बनना नहीं था। एक नेचुरल एबिलिटी थी उनके अंदर टू एक्सप्लोर, टू स्टडी मोर एंड टू एनरिच देमसेल्व्स कंटिन्यूअसली।
और उसकी वजह से उनको वो ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर आज भी वो माशाल्लाह एक कतर के अंदर जो है वो एक जो है वो सेंट्रल बैंक के अंदर होता है, बहुत बड़ी पोजीशन पे है। इसी तरह से दूसरा इंडिविजुअल जो है वो इस वक्त डिलॉयट यूके चला गया हुआ है और वहां पे सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे है। सो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें यूजुअली हम लोग परसीव करते हैं कि जो है वो शायद नेपोटिज्म हमें सपोर्ट करता है या हमारे कनेक्शंस हमें हेल्प करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, और हमारी स्किल्स का या हमारे टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन हमारे सोसाइटी में है, लेकिन जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड अगेंस्ट दिस नोशन। सो कमिंग बैक, जैसे कि मैंने कहा कि इन रिपोर्ट्स को लाजमी पढ़ें, और ये एक एक्सट्रैक्ट है जो मैंने अभी आप लोगों के लिए निकाला है। इससे आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्यों चाहिए स्किल्स, जिनकी अभी मैंने कुछ की बात करनी है और जो ईपीएसएम के अंदर आपको सिखाई जा रही है। व्हाई डू यू नीड दैट स्किल्स? तो सबसे पहले तो अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको ये पता लगेगा कि फाइनेंस प्रोफेशन का मुस्तकबिल है क्या। सबसे पहले एक्सेसिबल ट्रस्टेड डेटा विल ड्राइव रियल टाइम कस्टमर सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग। तो इट मींस कि डेटा का रोल सिग्निफिकेंट है आज भी और गोइंग फॉरवर्ड भी। बिग डेटा इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू हैव। जिस तरीके से एक जमाने में ऑयल की डिस्कवरी के बाद ऑयल इकोनॉमी का तस्वुर आया था, ये अब डेटा इकोनॉमी है कंप्लीटली। सो यहां तक रिसर्चर्स ने और यहां तक थिंक टैंक्स ने लिखा है कि डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, अगर आपने पिछले 100 साल की खास तौर पे इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखा है, अगर क्विकली गो थ्रू भी किया है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो ऑयल है वो कितना बड़ा डिटर्मिनिंग और डिसाइसिव फैक्टर रहा है दुनिया की इकोनॉमी में, और ये स्टेटस अब डेटा के पास है। तो एक तो आज की दुनिया भी और मुस्तकबिल की दुनिया भी डेटा ड्रिवन है। डेटा में से आपने पैटर्न्स निकालने हैं, डेटा में से आपने इनसाइट जनरेट करनी है, जो आप जिसके थ्रू आपने गाइड करना है शेयर होल्डर्स को, सीनियर मैनेजमेंट को अपने रोल में। Existing planning, budgeting, and forecasting processes will be replaced by dynamic artificial intelligence supported modeling. Finance and operational data will be integrated into to give one unified version of the truth. Now, this is a very big statement. One unified version of truth. It means we are no longer talking about different opinions on a certain subject matter. We are talking about a system which would be able to give the decision maker one absolute truth. However, we are used to of talking about perceptions कि हर किसी का अपना opinion है. Everybody sees different things in a certain data or information presented to him. But यहाँ पे ये बहुत important statement है और ये बहुत thought provoking statement है कि इतना ज्यादा डेटा इनसाइट्स इस वक्त टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है कि आप उसमें से वन यूनिफाइड वर्जन ऑफ ट्रूथ निकाल सकते हैं। And obviously that one unified version of truth is what will be expected of you as professional accountants, that you are going to provide to the senior management and to the shareholders. If you will be a chief operating officer, if you will be a chief executive officer, your role will be to guide your shareholders, your board of directors, that where we are at the moment, and in guiding this you will act as precision. There is no room and there is no margin for any inaccuracy, because data insight model will be such strong that you would be able to get one absolute truth out of these data insights. Second, trusted data will be open and accessible across the organization. Artificial intelligence, machine learning, blockchain. Finance will assume a governance role over the quality and interpretation of data. Internal controls will be embedded through technology. अब मैं पर क्विकली स्किम कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए कि जिन स्किल्स का मैंने जिक्र करना है अपनी अगली स्लाइड्स में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक फ्यूचर का मैप है फाइनेंस फंक्शन का आपके सामने। फाइनेंस टीम्स विल स्पेंड ऑल ऑफ देयर टाइम ऑन जनरेटिंग इनसाइट्स. रिपोर्टिंग रोल विल डिसअपीयर. Delivery will be through self-service data presentation. External reporting will be real-time and integrated. Regulators will access data remotely.
on a real time basis. Think about the compliance for a moment कि अगर आपका regulator real time पे data access कर पा रहा है और system integrated है, और हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जहां पे हर चीज इंटीग्रेटेड है. सो इमेजिन करें कि कंप्लाइंस कितना रियल टाइम मैटर होगा कि जब आपके रेगुलेटर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली डेटा एक्सेस कर रहे होंगे, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, एंड इज इट going against the established laws of that country, of that sector or not. So you can very well imagine कि risk exposure क्या होगा और risk management क्या होगी. Finance team will focus externally on markets, competitors and spotting disruptions. Just look at the line. Every line is such thought provoking कि अगर मैं चाहूं या कोई भी थोड़ा सा learned आदमी भी जिसने कुछ 4 चीजें पढ़ रखी हैं मॉडर्न फाइनेंस प्रोफेशन के ऊपर, वो बोलता जाए इन चीजों के ऊपर तो वक्त कम पड़ जाएगा मगर बातें खत्म नहीं होंगी. हर लाइन इतनी थॉट प्रोवोकिंग है. कभी आपने ये सुना था कि फाइनेंस के लोगों का काम होगा मार्केट्स को एनालाइज करना, कंपैटिटर्स को एनालाइज करना, डिसरप्शंस को स्पॉट करना? मतलब ये तो ट्रेडिशनली मार्केटिंग रोल्स हैं, ये तो सेल्स के रोल्स हैं, ये तो हिस्टोरिकली मार्केटिंग और सेल्स के लोग इसके ऊपर काम करते रहे हैं. बट गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस हैं, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मनी पीपल. Then traditional finance roles will disappear. New roles, skills, and career paths will be needed. New roles will be required. Data skills are central to the new finance roles. Career development will be quite different with the transformation of the traditional finance function. Then another interesting line. Finance function will be virtual. Imagine just for a moment, think of this in your minds, that the whole finance function is going to be virtual. There is nothing which will be physical. No traditional finance. Core processing activities will largely be automated. Routine interactions will be through chatbots, apps, artificial intelligence. Finance adjustments will no longer be required as ledgers and sub-ledgers integrate to use blockchain. अब अगर इनकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं. ऑब्वियसली वो मेरा मकसद नहीं है, हम यहाँ पे EPSM पे बात कर रहे हैं. अगर आप सिर्फ एक ब्लॉकचेन को ही पढ़ना शुरू करें तो इट्स माइंड बॉगलिंग what it is going to do with the finance management, with the finance profession, with so many historical industries that we know for hundreds of years are going to completely, remodel themselves. Financial technology की example ले लें. Who would have imagined कि आपका बैंक completely आपकी application पे shift हो जाएगा, और फिर उसकी ऑडिट इंप्लीकेशंस, फिर उसकी फाइनेंस मैनेजमेंट इंप्लीकेशंस, फिर उसकी कस्टमर मैनेजमेंट इंप्लीकेशंस. And then traditional CFO role will no longer exist, be replaced by roles such as Chief Operating Officer and Chief Strategy Officer. There may be no business requirement for a senior finance leader to have stakeholder management be more important than financial acumen and the senior level. So stakeholder management क्या आप इस बेस पे करेंगे कि आपको डेबिट्स और क्रेडिट्स का बहुत अच्छा पता है या आपको रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक ही गुर है सबसे बड़ा, यू शुड नो हाउ टू मैनेज पीपल. और अभी हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आपसे बेहतर पीपल मैनेजर कोई नहीं हो सकता. सो ये एक बहुत क्विकली मैंने आपके सामने एक नक्शा रखा है मुस्तकबिल के अंदर जो आपका प्रोफेशन है वो कहाँ पे जा रहा है. और अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर अपनी राय दें, और मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जो है वो अनम्यूट करके अपना ओपिनियन शेयर करें. सो if I can ask Tehmeena Shahryar, if you can unmute Nizam Tehmeena, and if I may ask, what does she think about this? और फिर मैं जवाब भी देता हूं कि absolute truth क्या है. Tehmeena, you are unmuted from our end. You can just unmute yourself and
share your word. Ji Tamina. Is it me who is unable to listen to her, or Nizam, you also cannot? No, I can't hear her. I think there's something wrong with your audio device if you are using one. So you Okay. are So why unmuted not from. until okay, if there are any challenges, meanwhile, if we can unmute Ali Hassan Dar. Okay, Ali, you are unmuted from my end. You are on self-mute now. Yeah, speak. अस्सलाम जी वालेकुम। Ali. वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने इसके बारे में ना डाटा एनालिसिस के बारे में लाइक गूगल का भी एक लाइक देखा था फेसबुक पे कि डाटा एनालिसिस वो भी करवा रहे हैं, तो मैं एक्चुअली इसमें इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मुझे इसकी आउटलाइन का नहीं पता कि इसमें लाइक हम क्या लर्न सीखेंगे। हेलो। ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन अभी मुझे आप ये बताएं कि ये जो मैंने फाइनेंस फंक्शन का, जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइनेंस फंक्शन का मैंने एक फ्यूचर मैप आपके साथ शेयर किया है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? सर मैं तो एक्चुअली बेसिकली एग्रीकल्चर कंपनी से हूँ, लाइक लाइक ट्रैक्टर इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे उधर तो एक्चुअली वहाँ पे तो ये डाटा एनालिसिस वगैरह और लाइक एआई का अभी इतना ज़्यादा जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही वहाँ पे। मे बी ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में ये बहुत वेरी करता है, लेकिन लाइक ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ये अभी तक लाइक इनकॉर्पोरेट नहीं हो सका, और वहां तक अभी भी फोर सीन भी नहीं हम कर सकते कि ऐसी चीजें जो है ना वहां पे इम्प्लीमेंट होंगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आप ये प्लान किया हुआ है आपने कि यू आर गोइंग टू स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर प्रोफेशनल करियर? नो सर, मैं तो लाइक ऑब्वियसली बात है, हर लाइक ये मैं जो कोर्स कर लाइक ये लाइक डीजी स्किल्स जो है ले रहा हूँ, इसमें ये मेरा यही है मोटिव कि मैं जो है अपनी लाइक सैलरी भी इंक्रीज कर सकूँ और लाइक मूव भी कर सकूँ, लाइक कोई अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी में भी जा सकूँ, तो मेरा डाटा एग्जैक्टली, एनालिसिस में। जी जी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू कैन पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। मैं दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए और मैं इसी किस्म के इनपुट्स चाह रहा था। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए अंडरस्टैंड करना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां पे अगर ये चीजें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई या आप इवन फोरसी भी नहीं कर रहे कि ये अगले 10 साल में होंगी, दैट डज नॉट मीन कि आपने ये स्किल्स सीखनी नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका एम है खुद को ग्रो करना। वो अगर आपको आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में मौका मिलेगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलेगा तो एज अ प्रोफेशनल यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू स्विच योर ऑर्गेनाइजेशन। और चाहे हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम एफएमसीजी की बात करें, जितनी टॉप कंपनीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान बेस्ड हैं, चाहे वो ग्लोबल कंपनीज हैं, वो वन वे और दी अदर इन टेक्नोलॉजीज को अप्लाई कर रही हैं एट देयर डिफरेंट स्टेजेस। और खास तौर पे कोविड ने इस सारी सिचुएशन को, आप समझ लें कि अगर ये 5 साल दूर होना था तो ये 5 साल करीब हो गया। कोविड को आप एक हम समझें, कोविड ने बहुत सारी बिजनेस मॉडल्स को एक्सपोज कर दिया, टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को उसने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हाईलाइट कर दिया। सो इसलिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको आपका ड्रीम जॉब दे सकती हैं, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो एक तो ये चीज आपने बिल्कुल अपने जेहन में रखनी है।
अच्छा जी, मुगीज खान कह रहे हैं जी मे आई स्पीक। बिल्कुल जी। निज़ाम, अगर आप मुगीज को अनम्यूट कर सकें तो मैं चाहूंगा कि क्या थॉट्स हैं मुगीज के। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, मुगीज़ बात कर रहा हूँ। जी जी मुगीज। सर पहले तो काफ़ी खुशी हुई कि डिलॉयट से हैं आप, और डिलॉयट से मैं भी हूँ, और डिलॉयट की तारीफ जो हम सुनते हैं तो एक दिल से खुशी होती है। दूसरा ये कि सर ये मैंने कैच किया था बैक इन 2020 जनवरी जनवरी में मैंने एक टेक कंपनी के साथ जो है एक मेरा प्रोजेक्ट था। मैं एज एन डिलॉयट ही के साथ काम कर रहा था, लेकिन मैंने ये एक प्रोजेक्ट लिया था। तो उस जी उधर जी। मुझे जो है ना डेवलपर्स को जो है डेप्रिसिएशन का सारा जो है सिखाना था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, क्योंकि डेवलपर्स को बेसिकली वो कोड तो कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उनको डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। तो मैंने उनको सारा रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिकली जो है फिक्स एसेट रजिस्टर उनका पूरा बन रहा था, एक कंपनी का था। तो उनकी जो है डेप्रिसिएशन मॉड्यूल जो है मुझे वहाँ जो है उनको इम्प्लीमेंट करना था। तो ठीक है। मैंने जो है जब काम किया उनके साथ डेवलपर्स के साथ, फिर मुझे वहाँ एक बिजनेस एनालिस्ट मिला। उस ओके। बिजनेस एनालिस्ट ने मेरे साथ जो है वो आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में बहुत सारी उसने मेरे साथ जो है पीडीएफ, जो कि ना सिर्फ ये कि डिलॉयट की थी बल्कि केपीएमजी की थी, पीडब्ल्यूसी की थी, और ये 2018 2016 इतनी पुरानी पुरानी वो थी। फिर उसने मेरे जी साथ बहुत सारी मेरे साथ उसने काम किया, उसने मुझे सब सारी चीज़ें पता, हालांकि मैं सिर्फ हफ्ता इतवार जाता था, और बस हम लोग जो है वो जिस तरह का टेक कंपनी का माहौल होता है कि कोई ऐसे कोई उनका वो नहीं होता, लेकिन उसने मेरे साथ काफ़ी मुझे जो है ना ग्रूम किया उस लिहाज से। फिर मैंने जो है रिसर्च खुद से करनी शुरू की, और राइट नाउ मैं जो है कोर्सेज कर रहा हूँ, जो जैसे स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले मैंने कोर्स उठाया हुआ है। वो मैं लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन पे फ्री कोर्सेज भी हैं, ये अगर कोई सब सुन जी रहे हैं तो मैं बिल्कुल। ये कहूँगा कि लिंक्डइन पे फ्री कोर्सेज हैं। एक्सेल से जो है स्टैटिस्टिक के बारे में है, वो इतने इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स नहीं जाएंगे, लेकिन वो आपको स्टैटिस्टिक्स ऐसे सिखा देंगे कि मतलब आपकी जो है ग्रिप हो जाएगी। फिर एक्सेल पे ही डाटा एनालिसिस की स्किल्स हैं, उसके बाद जो है आप जो है सारी जो है पाइथन और इस पे आते हैं। तो उसने मुझे ये सिखाया बिल्कुल था बिल्कुल। कि बेटा जी जी। तुम जो है ना, मतलब मेरे जो बॉस भी हैं, वो जो उधर जो बॉस थे वो एक्स पीडब्ल्यूसी थे, और जो है वो खुद ओके। सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला ओके। था कि सबसे पहले जो है एनालिसिस से शुरू करना, फिर उसके बाद जो है एक्सेल से शुरू करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर तुम सीखते जाओगे, तो उससे जो है तुम्हारी रिफाइन हो जाएगी। बिल्कुल तो ठीक है। ये थैंक यू वेरी चीजें मच मुगीज। मैं चाहूंगा बाकी लोगों को भी, कुछ और लोग भी चाह रहे हैं। आपकी जो कमेंट्स हैं उनसे मैं ये कंप्लीटली गैदर कर सकता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताई, यू वर नॉट टेकन अबैक, you were always knew that from 2016 that this is something which is happening and which is going to come to the way of every professional accountant. Now there are few more people who want to share their views. I would like to share my views too. So Hira Jalal ko agar aap kar sake Nizam, I would like to hear what she has to say. Hello, Ashamkum sir. This is Hira. Sir, जी। I totally agree with you कि फाइनेंस प्रोफेशनल को खाली हिस्टोरिक डाटा पे अब हमारी चेंज हो रहा है सब कुछ, तो वी आर नॉट ओनली सपोज टू बी फोकस ऑन द हिस्टोरिक डाटा, बट वी आल्सो हैव टू लुक एट अदर डेटा जो और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें बेसिकली. But at the same time, we have, and how we can do it is because through these data analysis tools and everything. There was a session by ACCA just a few days back जिधर HPL के internal auditor आए हुए थे, internal audit के head आए हुए थे, और उन्होंने ही बताया था कि वो लोग they're already using this different types of data in their organization, and they're using it to generate different things. So I think it's already entered Pakistan, and already people are using these basically different types of data, even like qualitative data to understand how it works. So I'm pretty sure जिस तरह पहले बात की थी, जो लास्ट वाले दिन बिल्कुल बात ठीक की है। थी कि उनके बिल्कुल ठीक एग्रीकल्चर है। डिपार्टमेंट उधर नहीं है, तो yeah, so basically I agree with the fact, but I also agree कि it's already in Pakistan and we are already using it. Thank you. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अदनान
को अगर आप कर सकें अनम्यूट, ही आल्सो लाइक टू शेयर हिज थॉट्स। Sir, can you hear me? जी जी बिल्कुल। Okay, sir, मैंने जो है वो स्टार्टिंग अपनी करियर की क्या था बैक इन 2010, देन कन्वेंशनल इंडस्ट्री से आफ्टर चिराग समिट मैंने 2015 में इस फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन कर लिया था, राइट? बट since last 5 years I'm into this industry of fintech world. We are dealing with American banks, ठीक है? अब उनके अंदर सिलसिला ये है कि ये सारी चीजें वो लोग अपने पास इम्प्लीमेंट करते हैं, बट ड्यूरिंग द 5 years एवरी डे एक नई लर्निंग होती है। बट एक चीज जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ और मैं काफी वरीड भी हो जाता हूँ इस बात पे कि जिस तरह का ये फिनटेक वर्ल्ड है ना, तो टेक्नोलॉजी साइड पे थोड़ा सा एम्फेसिस ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू योर रिपोर्टिंग स्किल्स, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS हो गए और आपके जो की टेक्निकल जार्गन्स हो गए, आपके ऑडिट के हो गए, सारी चीजें, तो उसमें हम लोग डेली बेसिस पे नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक दफा आपने सिस्टम के अंदर एक डेवलपर को बैठ के वो चीज समझा दी तो ही विल एम्बेड इट इन द कोड। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, स्पॉट ऑन। अब एक फाइनेंस प्रोफेशन के लिए ये चीज थोड़ी सी कंसर्निंग हो जाती है, तो इस चीज को किस तरीके से हम करें कि यार अगर वो, क्योंकि हमारी मेन स्किल्स ही ये की स्टैंडर्ड्स हैं और की टेक्निकल नॉलेज है, सही है? अब वो अगर हम थ्रू दिस इसके अंदर आ जाती है, एक दफा कंप्यूटर में एम्बेड हो जाती है, सिस्टम कोड के अंदर एम्बेड हो जाती है, तो वर्चुअली डाटा उसके ऊपर प्रोसेस करता है और वो ऑटोमेटेड रिजल्ट सारे मिल जाते हैं। बट हमारी वो स्किल है वो ऑब्सोलेट होने लगती है। सो मेरी जो कोशिश होती है वो मैं अपने साथ जो करता हूँ लास्ट 3 years से मैंने किया हुआ है कि मैं जो आर्टिकल्स आ रहे होते हैं या जो भी नई ट्रेनिंग्स आ रही होती हैं, इवन दो के ACCA के जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन की आ रही होती है, तो मैं टाइम टू टाइम बेसिस पे कुछ IFRS के इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह ले रहा होता हूँ, जस्ट टू कि मेरी स्किल्स ऑब्सोलेट ना हो जाए इसके अंदर। सो एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि ये इंडस्ट्री इस इतनी मैच्योर नहीं हुई है सर, कि इतनी मैच्योर नहीं हुई पाकिस्तान में कि अगर मैं अब जॉब स्विचिंग के लिए सोचता भी हूँ तो आई डोंट सी मच वेन्यूज नाउ एज पर माय एक्सपीरियंस ओवर इन पाकिस्तान, कि जिसके अंदर अब मैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर तो मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी कन्वेंशनल इंडस्ट्री के अंदर जाऊँ तो शायद उन्हें वो चीज़ की अडेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो AI के मॉड्यूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें। तो जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। बिल्कुल आपने स्पॉट ऑन कहा कि एक तो ACCA की प्रोफेशनल इनसाइट रिपोर्ट्स को जरूर देखते रहा करें, दूसरा आप आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा ACCA की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं, जिस तरह डिजिटल फाइनेंस के अंदर एक सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। जब आप अपनी एक मेन क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, जिस तरह ACCA आपने कर लिया, उसके बाद मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम अब आगे ICAW कर लें या फलां कर लें, तो मैं उनको हमेशा एक मशवरा देता हूं कि डिग्री के बाद कोई मेन डिग्री करना जरूरी नहीं होता। सो ऑलवेज लुक आउट फॉर गुड सर्टिफिकेशंस जो आपको ACCA के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, तो इवन हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के ही जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी ऑनलाइन डिलीवरी के अंदर बहुत सी सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रही होती हैं जो आपको टू स्टे अहेड ऑन द कर्व में आपको हेल्प करती हैं। दूसरी चीज ये है कि अब आप अगर ये समझते हो कि अभी ये चूंकि पाकिस्तान में इतनी मेच्योर नहीं हुई है, एंड आई अग्री टू सम एक्सटेंट विद यू कि पाकिस्तान में भी ये इतना मेच्योर नहीं हुआ, लेकिन मेरा हमेशा क्वेश्चन ये होता है कि हम एक ग्लोबल बॉडी का पार्ट है। मैं बीइंग अ मेंबर, व्हाई नॉट आई शुड थिंक ग्लोबल। मेरे बेशुमार बैचमेट्स ऐसे हैं, मेरे बेशुमार और कॉलीग्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाकर काम जिन्होंने किया। मैं बल्कि यहाँ तक कहता हूँ आपको कि यूजुअल परसेप्शन ये होती है कि जी अगर किसी को किसी दूसरे मुल्क की जॉब चाहिए तो उसका उस मुल्क में होना जरूरी है। बट मैंने ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ पे लोगों को अपने रेजिडेंट कंट्री में बैठ के बाहर की कंपनीज ने बुलाया और रिक्रूट किया। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपना जो माइंडसेट है वो ग्लोबल रखें, उसको लोकल ना रखें। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे आइंदा आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है। बिग कंपनीज के पास, गवर्नमेंट्स के पास इसको एम्ब्रेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिजिटल, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और
बहुत जल्दी आपको इस प्रोसेस में तेजी नजर आ रही होगी। अगेन नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी नहीं है, ये अब एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है जो कि आ चुकी है अमंग द सोशल सोसाइटी, अमंग द थिंक टैंक्स, कि जब तक हम लोग डिजिटल को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैंने एक सेशन एएलपी के ट्यूटर्स के लिए अरेंज किया पिछले साल, और मैंने वहां पे इनवाइट किया फिनका के सीओओ को, और वो मुझे ये बता रहे थे कि जिस स्पीड से इस वक्त अब पिछले कुछ सालों से हुकूमत काम कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, वो पेस और स्पीड हमने पहले कभी नहीं देखी अपने 25 साल के करियर में। जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि ऑन द बैक साइड ऑफ द डोर बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर की रफ्तार स्लो होती है, उसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। लेकिन ऑन द प्राइवेट साइड आपको बहुत जल्दी इवन पाकिस्तान के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आना शुरू हो जाएगी। अभी अगर आप देख लें तो जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं वो कोविड की वजह से बहुत ज्यादा चूंकि एक्सपोज हुए हैं, तो अब इसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट भी नजर आएगी और इसके ऊपर काम भी होता हुआ नजर आएगा। बट अगेन आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। आपने अगर इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ थिंक ग्लोबल, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि पाकिस्तान में कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। स्काई इज द लिमिट, पूरी दुनिया आपके सामने है, तो उसको आप एक्सप्लोर करें। सो कुछ और कमेंट्स भी हैं। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मुझे आगे भी बढ़ना है। सो तहमीना जो है वो अगर हम उनको अनम्यूट कर सकें एज अ लास्ट पार्टिसिपेंट, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रीवियसली, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी निजाम, काइंडली अगर तहमीना को आप अनम्यूट कर सकें। जी तहमीना। Hello. जी Yes. Can you hear me? यस, लाउड एंड क्लियर। Yeah. A few words about the data. यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि डेटा पहले हमारे पास उस तरीके से यूज नहीं होता था। तो आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि आई थिंक कि डेटा डेकेड्स अगो हमारे पास यूजेज में था। अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट, amazon या गूगल, तो दे हैव बीन कलेक्टिंग डेटा। हार्वेस्टिंग का काम तो उस वक्त भी डेटा का हो रहा था। और हमारे पास अगर हम कहें कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर डेटा इज, तो वो ये है कि डेटा इज गोइंग टू इवॉल्व नाउ। द रोल ऑफ डेटा इन द मार्केट इज इवॉल्विंग। पहले जो डेटा था वो काफी हद तक हमारे पास हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का यूज हो रहा था। नाउ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर डेटा इज कि डेटा जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें एक ठीक चीज है। नजर आती है कि विद द प्रोसेस ऑफ टाइम, जिस तरह की हमारे पास डिजिटलाइजेशन आ रही है, जिस स्पीड पे काम हो रहा है, अब डेटा सिर्फ ये नहीं बताएगा कि हम क्या कर रहे थे या हमने क्या किया था। हमें डेटा ये भी बताएगा कि फ्यूचर में हम क्या ऑप्शन लेंगे तो उसका क्या आउटकम आएगा। तो दिस इज व्हाट फ्यूचर एग्जैक्ट, होल्ड्स फॉर द डेटा। बिल्कुल ठीक है, स्पॉट ऑन। और इसी से मैं जवाब लिंक करूंगा जो अभी कुछ देर पहले किसी एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। सो ये जो बात अभी तहमीना ने की है वो यही है कि डेटा तो हमेशा से रहा है। एक जमाने में फाइल्स के अंदर था, फिर उसके बाद मेन फ्रेम्स आए, उसके बाद डेस्कटॉप आया। सो डेटा की इंपॉर्टेंस तो रही है हमेशा, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल नहीं थी, ह्यूमन माइंड के लिए इतने बिग डेटा को प्रोसेस करना, उसमें से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, को रिलेट करना और प्रिसिजन क्रिएट करना मुमकिन नहीं था। अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इतने हाईटेक हो चुके हुए हैं कि वो उस डेटा में हिडन पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं। और उन हिडन पैटर्न्स को जब आप डिस्कवर करते हैं तो फिर आप प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस की तरफ जाते हैं। फिर आप फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं विद सच प्रिसीजन कि आपका डिसीजन जो है वो अपने टारगेट को कभी मिस कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर एमआईटी ने पिछले, खास तौर पे वर्ल्ड वॉर टू के बाद जितनी भी रिसर्च की है, उसके अंदर एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव वाज प्रिसिजन, कि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट अगर डेवलप किया जा रहा है तो प्रिसिजन मैटर्स द मोस्ट। आपके लिए शायद ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि जो लाहौर की बैटल थी 1965 के अंदर, उसके अंदर जो डिफेंडर थे लाहौर के, जो जिनको निशाने हैदर भी मिला है, राजा अजीज भट्टी, उनकी जो एक वन ऑफ द स्किल थी वो थी प्रिसिजन, प्रिसिजन अटैक।
उस प्रिसिजन अटैक की वजह से जो एनिमी की जो टैंक्स थे और एनिमी की जो फॉर्मेशन लाइंस थी उनको हैवी डैमेज हुआ, और वो प्रिसीजन अटैक्स ने मेक श्योर किया कि वो एनिमी फोर्सेस जो डीप इन लाहौर आ चुकी हुई थी उनको रिट्रीट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ एंड एट द सेम टाइम टैंक्स एंड टू देयर आर्टिलरी एज वेल, बिकॉज प्रिसीजन बहुत ज्यादा अटैक्स किए गए थे उस बटालियन की तरफ से जो डिप्लॉयड थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, वाज बीइंग हेडेड बाय अजीज भट्टी। सो जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट बनता है या पिछले 50-60 साल से बन रहा है, उसका एक ही पर्पज है, प्रिसीजन को इंप्रूव करना। गाइडेड मिसाइल्स का तस्वुर है ही प्रिसीजन को इंप्रूव करना। सो आई वुड कंप्लीटली एग्री विद तमीना कि डेटा हमेशा से मौजूद रहा है, बट द रोल ऑफ डेटा इज नाउ इवॉल्विंग, and thanks to advent of so many different technologies, artificial intelligence, etc., that now human beings are capable of looking through this data, and that's how we will be able to come at an absolute truth. और एक और चीज मैं एक फिलोसॉफिकल वे में आपको समझा देता हूं कि यूजुअली लोगों के यहाँ दो तस्वुरात होते हैं कि थिंग्स एग्जिस्ट इन शेड्स ऑफ ग्रे। हर चीज में कंप्लीटली राइट और रॉन्ग नहीं होता। नाउ ये अब अगेन डिबेटेबल चीज है, मैं इस पे सिर्फ अपना ओपिनियन दे देता हूं। मेरे मानने में हमेशा एक एब्सोल्यूट ट्रुथ एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। ये एक अलहदा बात है कि ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को हर सिचुएशन में डिस्कवर नहीं कर पाती, और इसीलिए जो ह्यूमन माइंड है वो ये सजेस्ट करता है कि थिंग्स एग्जिस्ट इन शेड्स ऑफ ग्रे। यस और नो के दरमियान बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, राइट और रॉन्ग के दरमियान बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। वी कैन नॉट सी थिंग्स एब्सोल्युटली इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये एक ह्यूमन लिमिटेशन है। बट इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ हर चीज का एग्जिस्ट करता है, बट क्या एक ह्यूमन माइंड उस तक पहुंच सकता है? दैट इज अनदर क्वेश्चन। सो पीपल who really are capable of transcending their minds by their efforts, by their good deeds, they have always been able to look through this data, this information, and discover the absolute truth. ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अक्सर एक वाकया कोट करता हूं जो कि एक कुरानिक वाकया है, जिसके अंदर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और जो जनाब मूसा हैं उनका एक वाकया है जो कुरान ने नकल किया है एक सूरत के अंदर, और उसके अंदर यही बात है कि जब उस सफर पे पैगंबर खिजर अलैहिस्सलाम के साथ चलते हैं तो ही रिमेन्स अनएबल टू डिस्कवर द एब्सोल्यूट ट्रुथ कि ये जो एक्ट इन्होंने किया है इसके अंदर ये क्यों एक्ट किया है, ये गलत है या ये सही है। और हर पॉइंट के ऊपर वो इसी चीज को लेते हैं और जनाब खिजर उनको जवाब देते हैं कि मैंने कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। इस तरह के बहुत से वाकयात आपको कुरान के अंदर मिलेंगे, हिस्ट्री के अंदर मिलेंगे, जहां पे पीपल ऑफ विजन, पीपल ऑफ विजडम, people of consciousness, absolute consciousness, they have been able to look at the absolute truth, but we as common normal human beings, ये हमारी human limitation है कि हम absolute truth को नहीं देख पाते हमेशा। Because of this technology, when we will be analyzing a certain cohort of data, it will be very easier for us to reach to that unified version of truth जिसका ये रिपोर्ट जिक्र कर रही है। So thank you very much रिजवान for this। बिल्कुल सूरह कहफ के अंदर ये वाकया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये एक आइडिया था आप लोगों को बताने के लिए टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाई डू यू नीड स्किल्स। जिस तरह अभी मोहम्मद अदनान ने कहा कि आपकी जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल गैर जरूरी हो गई है, बिकॉज वो तो सिस्टम डेवलप करते वक्त एक दफा फीड हो गई और अब वो सिस्टम अप्लाई करता जा रहा है। तो हम किस लिए मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं? That is the big question that each one of you should ask कि before that कि आप उस वर्ज पे पहुंचे, you should start learning about these latest skills. It means audit is performed with absolute assurance rather than reasonable assurance. Yes, very right Ali Hassan Dar, you know, खूबसूरत पॉइंट आपने रेज किया है कि जो रीजनेबल एश्योरेंस है, ऑब्वियसली लीगली शायद इसको हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, बिकॉज रीजनेबल एश्योरेंस इसलिए कहा जाता है कि लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करना मकसूद होती है।
एक ऑडिट पार्टनर हमेशा अपनी लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, दैट्स व्हाई रीजनेबल एश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ताकि कल को अगर लिटिगेशन में बात जाती है तो ऑडिटर ये क्लेम कर सकता है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस किसी भी चीज की नहीं है। बट विद दिस प्रिसिजन डेफिनेटली थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहाँ पे लकूनाज हैं, कहाँ पे फ्रॉड नजर आ रहा है। ये पॉसिबिलिटी अब हमारी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बट क्या लीगल लीगैलिटी के अंदर उसको प्रोफेशन लेकर आएगा, या लिमिटेड लाइबिलिटी का जो लेवरेज है और जो कुशन है वो ऑडिट फर्म्स को दिया जाएगा, दिस इज अ लीगल डिबेट। बट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस वी कैन मूव from reasonable assurance to an absolute assurance. That is very much possible. Kindly answer how to update ourselves. We are updating ourselves, Bilal. At the moment, this is what we are doing. We are updating ourselves. आगे बढ़ते हैं जी। क्या है डेटा एनालिटिक्स? बहुत क्विकली मैं टच बेस करूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा मकसद इसकी डिटेल में जाना नहीं है। ये बहुत डिटेल्ड, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और मैं खुद को इसका एक्सपर्ट भी क्लेम नहीं करता हूँ। सो इसलिए मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, जो कि ऑलमोस्ट अभी तक डिस्कस भी हो चुका है, कि ये क्या चीज है। ये आप जो अपने सामने डेफिनेशन देख रहे हैं, ये आईफैक की डेफिनेशन है, जो हमारी पेरेंट बॉडी है पूरी दुनिया में प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की। वो ये कहते हैं कि जी ये एक ब्रॉड टर्म है जो डाइवर्स टेक्निक्स को एनकम्पास करती है, और इसका जो मकसद है वो इनसाइट्स जनरेट करना है डेटा से। और आजकल इस टर्म को या ज्यादा यूज किया जाता है बिग डेटा को और हाई वेलोसिटी डेटा को एनालाइज करने के लिए, जो कि यूनिक कॉम्प्यूटेशनल और डेटा हैंडलिंग चैलेंजेस पैदा करते हैं। अब ये जो बिग डेटा है, डेटा तो एग्जिस्ट करता था मगर बिग डेटा एग्जिस्ट नहीं करता था। हाउ? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिग डेटा को जनरेट कर रहा है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया बिग डेटा को जनरेट कर रहा है। प्रेफरेंसेस, आपकी लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो प्रोफाइलिंग आज की जा सकती है वो आज से 25-30 साल पहले नहीं मुमकिन थी। हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा एग्जिस्ट करता था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फर्म्स, कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज एक लिमिटेड टेरिटरी में सेल कर सकती थी। ऑल्दो आई एग्री कि अमेजोन का मॉडल बहुत पुराना है, लेकिन अमेजोन को भी अगर आप पिछले 20 साल के अंदर रिव्यू करें उसकी भी एवोल्यूशन को, तो आपको ये पता लगेगा कि अब जो अमेजोन आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जब आप लॉग इन करते हैं, वो आज से 10 साल पहले नहीं था पॉसिबल। अब जिस तरीके से आपकी प्रेफरेंसेस को अमेजोन कैप्चर कर पा रहा है, आपकी लोकेशंस को कैप्चर कर पा रहा है, आपके इंटरेस्ट्स को कैप्चर कर पा रहा है, ये आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इस तरह से मुमकिन नहीं था। सो बेसिकली जो बिग डेटा है, उस बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई एक आज का फिनोमिना है। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर माय maternal cousin was doing his BCS from Park Ames in Lahore, और मुझे याद है कि it was 98-99 he used to tell me कि हम लोग, हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये it was there as early as 80s। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च हो रही थी, इसके ऊपर बात हो रही थी, इसके ऊपर काम हो रहा था। लेकिन इसका जो कमर्शियल इंपैक्ट है, इसका जो सोशल इंपैक्ट है, वो हमें अब पिछले 5, 7, 10 सालों से नजर आना शुरू हुआ है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये इंपैक्ट मजीद इंक्रीज होगा। क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज फाइनेंस प्रोफेशनल? कॉस्ट रिडक्शन होती है, आप अपने प्रोसेसेस को रीएनालाइज कर सकते हैं। आप सब लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, आप सब लोगों ने वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का तस्वुर पढ़ रखा है। हर प्रोसेस को री इंजीनियर करने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, ये आप पढ़ चुके हैं P3 में या SPL के एग्जाम में। री इंजीनियरिंग भी की पॉसिबिलिटी भी मौजूद रहती है, पॉसिबिलिटी टू रीडिस्कवर भी मौजूद रहती है। सो all this data mining and all this data handling through this artificial intelligence is going to help professional accountants reduce the cost of production, cost of processes. Then
फास्टर एंड क्विकर डिसीजन मेकिंग, स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाएगी, रियल टाइम एक्सेस टू एवरीथिंग, जिससे दो चीजें होंगी, रेवेन्यू ग्रो करेगा और मार्जिन इंप्रूव होगा, नई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट हो पाएंगी, रिस्क्स एंड कंट्रोल्स का पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं, आप सब लोग क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स हैं, मुझे इसमें जाने की कतई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब आप एक असेंबली लाइन को ज्यादा बेहतर एनालाइज कर पाएंगे, जब आप जहां पे कॉस्ट इनकर हो रही है, जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उनको ज्यादा बेहतर स्कैन कर पाएंगे, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन। और एक और चीज जो मोहम्मद अदनान ने बात की, अभी अगर मोहम्मद अदनान एक अमेरिकन फर्म के साथ अटैच्ड हैं और वहां पे ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं और उनको ये लगता है कि बाकी जगहों पर ये चीजें अभी उतनी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, बी रेडी। आप ही वो इंडिविजुअल हैं जिनको बुलाया जाना है मुस्तकबिल करीब में, दैट इफ यू आर केपेबल इन डूइंग दिस, प्लीज कम ज्वाइन अस एंड हेल्प अस ट्रांसफॉर्म आवर ऑर्गेनाइजेशन डिजिटली। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं देता हूं ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशंस के। जिन लोगों ने एक जमाने के अंदर केपीएमजी में और डिफरेंट अदर फर्म्स के अंदर इंप्लीमेंटेशन के अंदर ट्रेनिंग की थी, I know personally few people who then have made a lot of money later on. मैं एक मिसाल देता हूं, जिस तरह महमूद ग्रुप एक बहुत फेमस ग्रुप है पाकिस्तान का, सो उसके अंदर जो चीफ थे इस ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशंस के, who used to have that hefty amount from that organization, he was an ICAP member and as well as an ACCA member. I remember vaguely that he came there as an implementer from probably KPMG and eventually he was hired. अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंडिविजुअल से मिला जिनके भाई अगेन मेंबर हैं, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हैं, और he used to work for KPMG. He went to KPMG Qatar. KPMG Qatar का क्लाइंट था सेंट्रल बैंक ऑफ कतर, और अगेन किसी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन के सिलसिले में उनका सेंट्रल बैंक ऑफ कतर के साथ काम था। इवेंचुअली कतर सेंट्रल बैंक हायर्ड हिम दैट कम जॉइन अस। सो ये भी आप अपने ज़हन में रखें कि अगर अभी आपको लग रहा है कि ये स्किल हमारी इस सेक्टर के अलावा कहीं और यूज नहीं होनी है, तो स्टे पुट। वो टाइम बहुत करीब है जहां पे पाकिस्तान के अंदर आपको कंपनीज इनवाइट करना स्टार्ट कर देंगी। और इसका एक दूसरा बड़ा हुक, सीपैक। मुझे नहीं पता कि आप सीपैक को पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं या इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं। मैं इसको प्योरली इकोनॉमिक एंगल से देखता हूं, और अगर मैं सीपैक को इकोनॉमिक एंगल से देखूं और मैं इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल को थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर दूं, ट्रस्ट मी, दिस प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग टू फेल, बिकॉज जो इसके पीछे लोग हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि व्हाट इट मेंट फॉर एवरीबॉडी विद इन द रीजन। ये सिर्फ चाइना के लिए फायदेमंद या ईरान के लिए फायदेमंद या किसी एक और मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। बीआरआई का अगर आप विजन पढ़ें तो ये माइंड बॉगलिंग है, और बीआरआई पे एक हमने रिपोर्ट भी प्रोड्यूस की थी, उसको भी अगर आपको मौका लगे तो देखिएगा। और ये भी देखिएगा कि हिस्टोरिकली जब शाहराहें बनती थी तो उनका इम्पैक्ट कितना परवेसिव होता था। यानी ये जो जीटी रोड है, ये जब शेरशाह सूरी ने बनाई थी, तो अगर आप उस जमाने के अंदर इकोनॉमिक इम्पैक्ट को पढ़ेंगे, बीआरआई मींस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मंसूब किया जाता है कि ये प्रेसिडेंट शी जो है इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट चाइना के, ये उनका एक विजन था बेल्ट एंड रोड का, कि किस तरीके से पूरे इस रीजन को, जिसमें एशिया माइनर भी आता है, साउथ ईस्ट एशिया भी आता है, साउथ एशिया भी आता है, सेंट्रल एशिया भी आता है, इसको किस तरह से हमने कनेक्ट करना है थ्रू रोड्स, थ्रू रेल्स एंड थ्रू सी रूट्स। सो जो कनेक्टिविटी है बेसिकली पूरे रीजन की। सो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको अगर आप पास्ट में लेकर जाएंगे तो यू वुड इमेजिन कि जब शेरशाह सूरी के जमाने में जीटी रोड बना था, तो उस जमाने की अगर आप तारीख पढ़ें तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा। और इसीलिए नहीं, आज तक मुख्तलिफ जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो शेरशाह सूरी को आज भी एक बहुत सक्सेसफुल रूलर के तौर पे याद करते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा काम था, इतना बड़ा रोड क्रिएट करना जो कि एक इतने बड़े रीजन को कनेक्ट करता था। एंड देन इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। और फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो सीपैक है,
इसको आप कोई छोटी चीज मत समझें। अभी आपको शायद ये लग रहा है क्योंकि जाहिर है अभी चीजें टर्मोइल में हैं, बट ये सूनर और लेटर खत्म हो जाना है। और उसके बाद जो ईरा सीपैक के इम्पैक्ट का स्टार्ट होना है, बी रेडी फॉर दीज स्किल्स टू बी यूज्ड, और वो को बहुत देर की बात नहीं है। फिर जिस तरह अभी बात हुई टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स की, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है, प्रिडिक्टिव है, प्रेस्क्रिप्टिव है। अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल आपको ये बता सकता हूं कि this big data analytics is so critical that a professional accountant would be the king of that organization, trust me. और इसके अंदर एक और चीज जो रिपोर्ट में आपको मिलेगी फ्यूचर ऑफ फाइनेंस में, you will be known as business partner and your role will be so critical that no marketeer, no sales individual will be able to beat you there, because you will be the people who would know how to unearth different patterns hidden in the data through different data analytics techniques. और obviously EPSM के अंदर एक complete module exist करता है data analytics के ऊपर, और obviously it's going to be of immense value to begin with. Right. अब आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, डेटा एनालिटिक्स के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, और मैं 10-15 मिनट वाइंड अप करूंगा एंड वी कैन टॉक ऑन अनदर सेशन इफ नीड बी। मैंने हारून साहब से बात की थी, वी कैन यूटिलाइज अनदर एपिसोड एज वेल। सो अगले 10-15 मिनट में हम वाइंड अप करेंगे। अभी मैं चाहूंगा आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो राय दे सके, मुझे जरा बताएं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट डू यू नो ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं इसको थोड़ा सा पीछे रखता हूँ फिलहाल। सो एवरीबडी, चैट बॉक्स, क्वेश्चन पैनल बॉक्स, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? सो कौन सा पॉइंट असर ने बोल दिया क्लियरली? एग्जैक्टली पॉलिटिकल फॉर चाइना एंड इकोनॉमिक फॉर अदर्स, अनएबल टू हियर। ओके, बीइंग इन कंट्रोल ऑफ वंस इमोशंस। थैंक यू हिरा जी। आई होप आप लोग थक नहीं गए हैं and you have not exhausted your energies already. It is about stepping in other person's shoes. Fair enough. Good one. Thank you, Hassan Soleh. Emotional connectivity to your commitments, how well you remain consistent. Good. Attach your emotions with others. Okay. Ability to manage people. Being aware of your emotions pattern. True. To recognize emotions and directing its use efficiently. The ability to monitor one's own and other people's emotion. True, very true. The ability to monitor one's own emotion, right? Having ability to monitor your own and other emotions as well, right? Right. Okay, okay. uh out of all of you, and how many people do we have at the moment? There are 83 people present. The next question that I would like to put to all of you is that how good you are with people. Do people, or let me rephrase the question, let me put a closed question. Do people think you friendly? And be very bluntly honest about it. Yes or no? Yes. Okay. Yes. Sometimes they do. Yes. Okay. Okay. Yes. Yes. To understand. Yes. Yes. Maybe. Okay. This maybe is interesting. Yes, I guess so. That is interesting. No. Oh, okay. Uzair Ahmed. Okay. No. Okay. Yes. Yes. Okay. Okay. All right. So let me first pick no, because I'm more interested on this honesty. Because sometimes I always say we ourselves don't know whether people like us or not, and especially with accountants. Let me be very honest with you, and I will not be considered a discriminated and discriminatory and racist in this, because I am myself a professional accountant. So everything what I say will be for me equally as it will be for you. Professional accountants are less people friendly people. They are less people friendly. Naturally, they are.
And obviously there are different facts, there are different reasons why that is the case. I'll come to that why. uh, first of all, if you could unmute Uzair Ahmed, Nizam, I would like to hear why he thinks he's not people friendly. Go ahead, Uzair. You're unmuted. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Ji, walaikum assalam. Ji, Uzair, please go ahead. Hello? Ji, Uzair, I can hear you. Please go ahead. Sir, actually, the reason is that I'm working in the role of internal audit department. So, whenever we point out anything, people are thinking कि हम लोग जो है वो maybe we are challenging their, maybe we are undermining their authorities, and that's why they are thinking कि we are not friendly. जी. और मुझे ये बताएं कि ये तो चले ठीक है, आपका रोल इस तरह से है, आई अंडरस्टैंड इंटरनल ऑडिट का रोल काफी डिफिकल्ट है, और इंटरनल ऑडिट के मुतालिक ये कहा जाता है ये गलतियां निकालने वाले लोग हैं, इनको गलतियां अच्छी लगती हैं, ये गलतियां ढूंढते हैं। तो चलें, ये तो एक रोल की भी मजबूरी है। पर्सनल लाइफ में मुझे ये बताएं, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने इमीडिएट सर्कल में, इतना ही ऑनेस्टली, क्या लोग आपको फ्रेंडली समझते हैं, या लोग समझते हैं कि आप ड्राई हैं, मूडी हैं, मूड अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं अच्छा तो बहुत बुरा है? सो ऐसा आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी फील होता है दैट पीपल रिमेन अलूफ फ्रॉम यू? जी निजाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई होप ही कैन लिसन टू मी। जी, loud and clear. Uzair is on self mute. If the question was directed to him, yes. दीदी उज़ैर प्लीज अगर आप अनम्यूट कर सकें। क्या यही फील आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी आती है, या दैट इज डिफरेंट कंप्लीटली? जी sir, actually I'm working in the role of internal audit since 2013, so it's been a long time working in that role, और इन चीजों की वजह से आई थिंक एक नेचर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के बारे में आपके परसेप्शंस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक मैं बिल्कुल ये इन चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ में भी फील करता हूँ, और ये चीजें मुझे यहाँ पे भी नजर आती हैं। Okay. Thank you very much for such an honest answer. Let me be very honest. It takes a lot of courage to speak the truth. This is not everybody's ball game, and we always try to hide behind perceptions, not the truth. So thank you very much, Uzair. It's very wonderful to hear your truth. Okay, now let us pick one yes. So who we are going to pick? Okay. So Rahila Khalik, she has also said yes. If you can unmute Rahila, so let's have a balanced view. That why does she think that she is very good in meeting people and making them friends and influence them. जी राहिला। जी Rahila, can you hear me? Rahila, you're unmuted from both ends, so if you could speak. Okay, there is another interesting comment from Farwa Abbas. If you can unmute Farwa, I would like to hear from her. People find me very friendly, but I'm still not emotionally intelligent. So
Kindly unmute Farwa. I think there are issues with Rahila internet. Hi, can you Farwa, hear me? yes, you can. Yes, sir. I was saying that yes, people find me very friendly, and I make friend very easily because my nature is really funny, and I like to go around and stay with people. So people find me very friendly, and I think all my workmates are my friends, and I get along with them very easily. But still, when it comes to emotional intelligence, I don't think so that I'm good in it because I don't have a good emotional control. I react very easily in situations when I should not. Impulsively. Yeah. That you can say that I'm very impulsive or sensitive. You can say. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग Thank पॉइंट. और अक्सर ये महसूस किया जाता है कि अगर आप बहुत फ्रेंडली हैं और अगर आपको लोग बहुत फनी कहते हैं और फन लविंग कहते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट है. दैट इज रॉन्ग. इमोशंस को सप्रेस कर देना, खामोश हो जाना, कोई बात ना कर पाना भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है. और यस पर्सन बन जाना, लोगों को ना कर पाना इस डर से कि वो ऑफेंड हो जाएंगे, या अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को चैनलाइज ना कर पाना. बिकॉज एक चीज हमेशा ज़हन में ये होनी चाहिए कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए नहीं होती है कि आप हर किसी की बात को यस कर दें, या आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हर इनिशिएटिव जो आपके पास आ रहा है एक वर्क प्लेस के ऊपर आप उसको एक्सेप्ट कर लें बिकॉज आप लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं. दैट्स हाउ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट. दिस इज पुटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू. और ये ज्यादा देर टेक्निक चलने वाली नहीं है. So, इसलिए ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एक तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव आया कि जहाँ पे बीइंग इंटरनल ऑडिटर चूंकि एक 7-8 साल का अरसा गुजरा है तो ऑब्वियसली एक नेचर में एक तबीयत में एक चीज आ गई है जहाँ पे आप तहकीक करते हैं, चीजों की डिटेल में जाते हैं. और ऑब्वियसली पीपल डोंट लाइक व्हेन somebody is being nosy, you know. And on the other hand, there is a perspective that if we say yes to everyone, if we we are very emotionally intelligent, what would happen that people will end up taking advantage of you on so many different fronts. So निजाम, हमारे पास कितना टाइम है? हम कंक्लूड कर लें तो is it all right? I couldn't catch that. Could you come again, please? जी निजाम जी, जी, I was can you saying कि come हम 9:30 तक अगर कंक्लूड कर लें तो is that all right? जी, I'm saying Fine by can me. be concluded by 9:30. Okay, Fine great. by me. So let me share with you. Okay, बिल्कुल ठीक. Let me show you a quick video and then we conclude. First, tell me that you are able to hear to the voice. Nizam, confirm me that the video is audible. Yup. So the introductory music was clear. Emotional intelligence interpret and जी निजाम, क्या कह रहे हैं आप? जी, it's clear. The audio is clear. Maybe check if it's on full volume and it's fine. It's just fine. जी, it is on full. Let me थोड़ा सा इसका और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं. Meanwhile, if you can see, others can do listen to the video as well. If you can type yes, if you can listen to the audio. निजाम, मुझे बताइएगा if there are yes. Yes, we can. Okay, great. चलें. So let's watch this video and then discuss it.
Emotional intelligence refers to the ability to recognize, interpret, and process emotions in yourself and others. While genetics, upbringing, and environment all play a role, there are steps you can take to develop your emotional intelligence over time. Get to know yourself. Emotionally intelligent people are self-aware. They have a realistic appreciation of their strengths and weaknesses and how they come across to others. Peer feedback is one way of improving your self-awareness and may uncover a few of your emotional blind spots. Learn your triggers. Linked to the notion of self-awareness is knowing how you are likely to respond in particular situations. Think about how you felt the last time you were under pressure. Did these feelings help or hinder you? Recognizing emotions and the source of these emotions can shift your emotional state. Empathize. Seeing things from someone else's perspective will help you understand their values and beliefs. This is important when it comes to motivating and engaging others. Make a conscious effort to get to know your colleagues. Ask open questions and actively listen to what they have to say, rather than simply waiting for your turn to speak. Be on the lookout for body language and other non-verbal signs, as these may tell you more than someone is willing to express out loud. Own your emotions. Part of being emotionally intelligent is about taking responsibility for the way you interact with others. If someone upsets you, pause and reflect on why their actions led you to feel this way, instead of reacting impulsively. Recognize that a conversation is a two-way interaction, and it takes two people to make you angry, sad, or frustrated. Go with your gut. Finally, listen to your body. If your stomach starts doing backflips every time you speak to a senior manager, or your muscles tense up before you go into a meeting, what does this tell you? Counterintuitive as it might seem, emotions can be a valuable source of information when making rational decisions at work. Remember, emotional intelligence isn't about suppressing emotions. It's about learning how to recognize, process, and channel them in a way that benefits you and your team. Enhancing your emotional intelligence requires effort, but it can be achieved with sustained practice. All right. So this was the video. And now, before I move on, I would like to hear from you. What do you really think? What this video tells you? Any thoughts that you want to share? Please write on the chat box. All right, so responses have started coming in. Recognize, process, channel for mutual benefit, know your trigger points. Interesting. A very concise video on workplaces. Loved the video. Put yourself in others' shoes while making decisions. By managing emotions, one can overcome weaknesses. To channelize, self-control, don't hide your own emotions. Putting your emotions to work. Assess yourself first. Thank you. All right. Any other? Listen to yourself. Nice.
The video tried to transmit positivity. Most definitely it does, Azhar. Thank you. Don't suppress your emotions. Don't hide your own emotions. True, Akib. But it is always wise to know how to express your emotions. At the same time, empathy, don't judge people too quick. True, Kashif. Never be judgmental in your life. Always give benefit of the doubt. Try to respond rather than react. Definitely very eloquently expressed. Try to respond and not react. Learning how to interact with other individuals, a good introduction to emotional intelligence and how to develop the skills through consistent practice. It's not easy to know the trigger points, most definitely, and then do not react to them. Even after you know them, you have to learn how to direct the reactions as well. Yeah, spot on, Tamina. Thank you. Listen to rather than argue. Again, very, very well expressed. Listen more, speak less. A very old maxim by people who were, epitome of wisdom uh, from Hazrat Ali. He always said this: listen more and speak less. Observe others to improve our own weakness. Learn about other people behavior. Know yourself. Emotional intelligence is the key to master your emotions. True, Maria. Thank you. Be open to know others point of view. Thank you, Akib. Thank you, Azhar. All right, very valid arguments. I am again very impressed by the kind of knowledge that you possess. Although I tend to see 8 to 10 people responding, or maybe maximum 20 people responding out of the 80 to 90 attendees that we have, and by now these are 71. I would have wished to see everybody responding to these, videos and questions that I am putting towards you from time to time. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जो क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे होते हैं ना, जो बहुत सवाल पूछते हैं, जो बहुत इंट्रीग्ड होते हैं, जो टीचर का बहुत सर खाते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं पीछे बैठे हुए जो बड़े हंसते हैं उनके ऊपर, लो अब ये शुरू हो गया, अब ना क्लास खत्म हुई, अब ना टीचर गया। और उसके बाद जब क्लास एंड हो जाती है तो उसके बाद भी उनकी अच्छी खासी जो है ना क्लास ली जाती है कि तुम जो है ना पीछे पड़ जाया करो ट्यूटर के। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि यही वो लोग हैं जो सवाल पूछते पूछते शाइन करते हैं, और वो जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस बहुत बड़ी दुनिया में, इस जिंदगी की बहुत बड़ी क्रूअलिटी के अंदर कहीं डिसअपियर हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। उस टाइम पे उनको ये रियलाइज नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या आएगा। उस वक्त एक जवानी होती है, एक तूफान होता है, एक एक जिसको कहते हैं टाइड्स होते हैं बड़े बड़े इमोशनल, और वो उनसे वो सारी ह्यूमरस चीजें करवा रहे होते हैं, बट सून दे रियलाइज कि वो जो बैक बेंचर्स थे thank you, Cobb. I would not like to comment on that, but again, I would say this is a humorous comment from your side. I hope I have pronounced your name correctly. Pardon me if I haven't. So ये बहुत important है सवाल पूछना, ये बहुत important है comment करना। इंसान के जिंदा होने की निशानी है कि जब कोई चीज उस पर गिर रही है, कोई मालूमात, कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा जब उस तक पहुंच रहा है, तो उसके रिसीव होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपना स्टांस, अपना मौकफ लेकर सामने आएगा, अपना पर्सपेक्टिव देगा, अपना इनपुट देगा। अगर वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है तो नेचर की नजर में टेक्निकली स्पीकिंग वो डेड है, बिकॉज उस पर कोई चीज असर नहीं कर रही जो भी कहा जा रहा है। ऑब्वियसली जितना इस वक्त मैं थका हुआ हूँ, जितने इस वक्त बाकी 15-20 लोग थके हुए हैं जो इस वक्त कमेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी सब भी उतने ही थके हुए हैं। मैं भी सुबह 9:30-10 बजे से आई एम वर्किंग एंड इट्स 9:30, 12 आवर्स डे है। सिमिलरली बाकी हमारे कॉलीग्स भी बैठे हुए हैं। सो इसलिए कमेंट करें, रिस्पॉन्ड करें, बहुत इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्ड करना। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ और फिर मैं रैप अप करूंगा, हम इसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह एक और एपिसोड, एक और सेशन के ऊपर।
तब तक आपकी जो स्टोरीज हैं वो भी मैं रिव्यू कर चुका हूँगा, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इस सेशन को प्लान कर रहे होंगे, मैं हारून साहब से कोऑर्डिनेट करके वो कर लूँगा अरेंज। गेट टू नो योर सेल्फ, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, बड़े बड़े सूफीज ने, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने, प्रॉफिट्स ने, कोई ऐसी बड़ी पर्सनालिटी नहीं है जिसने इस चीज की तरफ इंसान की तवज्जो नहीं दिलाई। जिस तरह इकबाल फेमसली कहते हैं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। सो इसी तरह के एक्सप्रेशंस आपको बेशुमार मिलेंगे। पोइट, जो बड़े बड़े पोइट्स गुजरे हैं उन्होंने इसकी बात की है, और ये नहीं कि सिर्फ जो मुस्लिम पोइट्स थे या मुस्लिम फिलोसफर्स थे। आप अगर निश्ते की फिलोसफी उठा के पढ़ेंगे, इम्यूल कांट को पढ़ेंगे, अगर आप इसी तरह से सोक्रेटिस को पढ़ेंगे, प्लेटो और अरिस्टोटल को पढ़ेंगे, अगर आप हेराक्लिटस को पढ़ेंगे, आप जिस भी तरफ देखेंगे, आप प्रॉफिट्स की लाइफ को पढ़ेंगे, हर किसी ने गेट टू नो योर सेल्फ की मुतल्लिक बात की है। जिस तरह एक बहुत फेमस हदीस है कि जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। सो आपको ये चीज हर जगह मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट you will find very few people in this world across all times who have actually understood the meaning of this phrase and who have actually tried to know themselves. Now, by doing this, I am not saying कि आप कोई फलसफी बन जाएं या आप कोई वली बन जाएं या आप कोई सूफी बन जाएं। Remain a ordinary individual, a professional accountant that you are, लेकिन बात एक ही है, get to know yourself। जिस भी एंगल से आप पिक करें, बात एक ही है, क्या आप अपने आप को समझते हैं? आर यू सेल्फ अवेयर? कैन यू अप्रिशिएट योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस? और इसमें सबसे बड़ा मसला पता है क्या आता है? इस वीडियो के अंदर आपने शुरू में एक जगह देखा होगा, स्टार्ट के अंदर जो कार्टून है वो शीशे के सामने जाके खड़ा होता है, और वहां पे नीचे लिखा हुआ आ रहा था, यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। अब ये जो शीशा है, ये जो मिरर है जिसके अंदर खुद को देखना पड़ता है, when you embark yourself on this endeavor of knowing yourself, ये सबसे मुश्किल काम है। और हमेशा लोग इससे घबराते हैं, हमेशा लोग इससे कतराते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने अंदर की कमजोरी को नहीं देखना चाहता, कोई भी इंसान अपने अंदर की बदसूरती को नहीं देखना चाहता, ये उसकी फितरत में है। और जैसे ही वो एक्सपोज करता है खुद को शीशे के सामने, तो वो अपना मुंह चुरा लेता है और वो डर जाता है। जिस तरह इसके अंदर एक बात की गई पीयर रिव्यूज की, इंतहाई इंपॉर्टेंट, जो आपके करीबी तरीन लोग हैं, जो आप समझते हैं कि एक अरसे से आपके साथ हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनको ये कहा हो कि टेल मी अबाउट माई सेल्फ, व्हाट आर माई वीकनेसेस? अपनी अच्छाई, अपनी खूबसूरती, अपनी इंटेलिजेंस, इसके मुतालिक तो सब सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये डेलिबरेट एफर्ट की है कि आप अपने पीयर्स को ये कहें कि criticize me, become a critique of myself, tell me where do I do wrong? How many of you have done that? Muhammad Adnan has done that. Yes, and there was a list of weaknesses. Okay, yes, discussion is important. I often try to use to ask from peers. Very right. 5 कमेंट्स आए हैं अभी तक, देखते हैं और कितने लोगों ने ये एफर्ट की है। बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अभी तक नहीं किया है तो इट डज नॉट मैटर। सुमैया, थैंक यू, यू हैव डन इट। Never. Thank you, Arsalan. Thank you for being honest. There is no reason to lie about it because there always is a first time for everything. I have done my assignment. Okay, Akib, thank you. Yes, never. Hassan Soleh, okay. Never, Arsalan, thank you. Never did. I did. I asked to ruthlessly criticize me. Okay, Shams, thank you. In my appraisal with my manager, very helpful. Okay. Do it every time whenever any guilt arises. Okay, okay. No, I do not do. Thank you, Fazan. Yes, I have asked about myself from peers. Thank you, Nakash. I have done 360 reviews on yearly basis.
Malik Shehbaz Hussain. Okay, yes, I do that. Okay, yes, I have. Okay, okay. No, because if they say something bad, maybe I'll stop liking them. Thank you, Parva, for this honest comment. I never asked about, because I know my weakness is Rahila. Okay, so this is an interesting, and I will wrap this up on this comment. You know your weaknesses. Yes, you would know your weaknesses. हर इंसान को पता होता है उसमें क्या कमजोरियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जितना अच्छा एनालिसिस आपका दूसरे कर सकते हैं, शायद उतना आप खुद नहीं कर सकते. बिकॉज एक प्रेजुडिस होता है, एक बायस होता है, एंकरिंग बायस प्रोबेबली इसको कहा जाता है. जिस तरह से रूमी की एक बहुत फेमस सेइंग है कि दूसरा इंसान आपके लिए शीशे की मानंद होता है, और आप उसमें, और अगर उन्होंने इसकी ये एक अच्छे दोस्त के मुतल्लिक कहा है कि एक अच्छा दोस्त जो है, जिसको सही मानों में दोस्त कहते हैं, वो इंसान के लिए एक शीशे की मानंद होता है. आप उसमें अपना चेहरा देख पाते हैं. सो इसलिए हमेशा पीयर रिव्यू हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के अंदर के ट्रिगर्स क्या है मेरे, कहां पे मुझे इंपल्स आती है. बहुत मुश्किल काम है ये. मैं खुद इस पूरे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ. जिस तरह मैंने बहुत ओपनली आपको कहा, बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं था, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में मैं ट्रेंड हुआ हूँ उसमें वहां पे सबसे पहले मुझे मेरे सीनियर्स ने रिडिक्यूल किया, मुझे उन्होंने बॉम्बार्ड किया विद क्रिटिसिज्म. उन्होंने मुझे बताया अकाउंटेंट होने का मतलब होता है बिल्कुल सठिया जाना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, उनकी गलतियां निकालना, अपने आप को मनी मैन कंसिडर करना, किसी की बात को ना सुनना, जहां पे दिल करे लाइन लगा देना रेड कलर की कि नहीं इसके लिए फंड्स इशू नहीं हो सकते, नहीं पेरोल 5 को प्रोसेस नहीं हो सकती, 10 कोई प्रोसेस होगी, वगैरह वगैरह. सो बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, इमोशनल कोशेंट हमेशा वीक होता है अकाउंटेंट का, क्योंकि अकाउंटेंट का ट्रेनिंग एनवायरनमेंट पे अगर आप गौर करें तो वो होता ही एक्सक्लूसिविटी पे बेस्ड है. अकाउंटेंट खुद को अलूफ रखता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसको मैनेजर ये कहता है, उसको सीनियर ये कहता है कि भाई यू आर कस्टोडियन ऑफ अ वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपने लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना, पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, दे विल गेट मनी आउट ऑफ यू, you have to stop them. Your role in the boardroom is to make sure that you put a red line that this cannot happen, we do not have funds, this is not the right use of funds. And this is what marketeers always talk about accountants, that they are the people who are troublemakers. Whatever we bring to the table, they are always there to cut it down, just because they don't want to give us money. So this is the usual perception of an accountant. He has always been on the exclusivity. So therefore ये बहुत important है कि you sit down and ask somebody close enough to you that what are my weaknesses, where do I offend you, where do I get impulsive, where do I get frustrated, and then reflect upon that. Why do you do that? Why you just can't ignore it? And you know why? My analysis as a student on myself and on people is your ego, is the wrong impression of your ego. कि आपको जो wrong impression है आपकी ego का, मैं कैसे ऐसे हो सकता हूँ, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मुझे किसी ने ऐसे क्यों कह दिया. एक छोटी सी बात है, मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं सड़क पे, और आपकी गाड़ी को हल्का सा कुछ टच कर जाता है, मोटर बाइक, साइकिल या कोई दूसरी गाड़ी, हम देखते हैं अपनी रोड्स के ऊपर, और मैं भी एक जमाने में अनफॉर्चुनेटली इसमें शामिल था, कि हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, शोर मचाते हैं, गालम गलोच शुरू कर देते हैं. क्या होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, गाड़ी को कोई एक स्क्रैच आता है मैक्सिमम, जिसके ऊपर थोड़े से पैसे लगते हैं. क्या सड़क पे चलते हुए ऐसी चीजें होना मामूल नहीं है पूरी दुनिया में? अगर फर्ज कर लें आपके ख्याल में कोई अच्छा ड्राइव नहीं कर रहा, ओके फाइन, ठीक है, बट वो सड़क पे तो है, वो इंसान तो है. बट हम सब, मैं इसमें किसी को नहीं, हम सब इसके अंदर कमजोर पाते हैं खुद को. हमारे अंदर वो पेशेंस, वो कामनेस नहीं होती है कि हम एब्जॉर्ब कर सकें कि फाइन एक चीज हो गई है, लेट्स टॉक. देयर इज नो नीड टू
frustrate ourselves. There is no need to get to hot words. There is no need to be abusive. Let's talk it out. आप उसको जाकर कहेंगे कि आपकी ये गलती थी, आई वॉन्ट माई डैमेजेस, वो इनकार करेगा। अब वो इनकार करेगा, आप 15 पे कॉल करेंगे, पुलिस आएगी, रिकॉर्ड करेगी उस सारे इंसिडेंट को और आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा। सो क्या हम ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इस मुल्क में भी कर सकते हैं। मेरे बेशुमार इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जहां पे मैंने 2 अप्रोचेस यूज की। एक अप्रोच कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, इम्पल्स आ गई, मैंने लड़ना शुरू कर दिया, ना मुझे गाड़ी का डैमेज मिला, मेंटल एग्नी और फटीग मैंने अलहदा बर्दाश्त की, और फ्रस्ट्रेट होकर मैं घर आया और रात को मुझे नींद भी मुश्किल से आई। एंड देन देयर इज अनदर वे जहां पे हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाइल वी आर ऑन द रोड वी नीड टू हैव, वो जिस तरह कहते हैं ना, एक बड़ी कॉमन टर्म है कि जो गाड़ी अगर रखी हुई है तो दिल भी बड़ा रखो, अगर बाहर निकले हुए हो तो दिल भी बड़ा रखो। नुकसान हो सकता है वो नुकसान पूरा भी ना हो, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लें, हम लड़ पड़े, हम अब्यूसिव हो जाएं? ऑब्वियसली नहीं। जी बिल्कुल रिजवान, वी आर गोइंग टू एंड दिस। सो देयरफॉर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे गेट टू नो योरसेल्फ में, और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपका जो टास्क है वो टास्क यही है कि अगले एक हफ्ते में, अब ऑब्वियसली इस वीक हम ये सेशन नहीं कर रहे होंगे लास्ट वन, अगले एक हफ्ते में पीयर रिव्यू की एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड, क्लोज कॉलीग जो आपके साथ बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन कर सकें, आस्क देम व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर ट्रिगर्स, जहां पे आपको गुस्सा आ जाता है, जहां पे आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड देन शेयर विद मी द पीपल हु हैव नॉट डन दिस सो फार, what do you get to hear? So from this point, thank you very much. I will wrap this up. If you have any last comments, question, please do let me know in the question panel. Thank you, Arsalan. Thank you, Hassan Soleh. I will, Nizam will let you know, Rizwan, obviously not on Friday, but definitely on Monday, hopefully. Thank you. Thank you. Much required. Great session. Thank you. Wonderful session. Thank you. Thank you. Take care. Meet you next week, inshallah. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Indeed, a very informative session. Thank you very much. Is nervousness is emotional phenomena or else? Definitely, it is emotional phenomena. I'll talk about this, Muhammad Umair, how nervousness acts. Can you please share your LinkedIn profile details? Hassan Ashraf, you can search me, Hassan Ashraf, and you can write ACCA as a reference point. I'll be there on the LinkedIn. Thanks a lot. Interesting session. Sorry, I couldn't speak. No issues, Rahila. We'll definitely will speak in the next one. Thanks. We discussed how to learn to say no. Let us know more. Sure. As much as I know, being a humble student, I definitely will try my level best to add value as much as possible. There should be more sessions. Definitely there will be. Thank you. Wonderful session. Thank you. You pushed to speak. I had communication issues, but today it helped out. Thank you, Zad. Thank you, Rahila. Thank you, everybody, for your comments, for your kind gestures. I'm humbled with all these comments. Thank you very much. Speak soon, inshallah. Thank you very much, Nizam. Over to you. I don't know if Harun Saab is still around, or otherwise we can close it. Ji, Nizam, can you hear me? Right. So no, Harun Saab is not. He is around, but he's a bit occupied. Okay. Do we have first of all? Do we have anything for Friday? Their tomorrow's moderated session, unmoderated session. Exercise आपने दे दी है इनको sir? No, actually, I have given them the task, so they have to go to their peers, the closest one, and they will sit down and ask about themselves, and they will list down 5 weaknesses that they discover. So this is the task for everyone. List down 5 weaknesses that you have, and we will see how brave you are in sharing those in front of the audiences. ठीक है, So that is the task.
this will be your task then, and you will be sharing among yourself. Secondly, I have two announcements. Coming from Harun Saab's end, we'll be having 4 sessions after EPSM on tax, and then 2 on financial modeling. So that's a short announcement. 4 sessions on tax and 2 on financial modeling after this very session being delivered by our own Hassan Shraf. Right. So thank you so much for this session. Without taking much time, thank you so much, sir, Hassan sir, and everyone. Thank you. Thank you very much. So stay safe. see you Speak next soon. time. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everybody. Inshallah. Take Allah care. Hafiz. Allah Hafiz.